am so sorry, Dr. Keshav, I want to disturb the House. please don't do it. Please don't do it. For my sake, don't do it. I'm not doing it. I said this was I can discussed assure yesterday the members, for 2 please hours. take 2 hours in the leaders of the opposition each meeting. of the members who has done it is cautioned by me not to do it. I am one of you. I depend on your wisdom, on your talent, on your knowledge to exemplify the best conduct which can be approved by the people outside. Let us not make mockery of it. Please. We are at a time when we are having great moments. Our country is defining global discourse. These are not political issues. All I say is, you will have the occasion. Dr. Keshav, take your seat. You will have the occasion to fully indicate. Agenda has been spelled out. You will know it. Jairam Ramesh, the least you can do is, if you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second, leader of the opposition. Honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूँगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है. आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है. वो बात मैंने बाकियों के लिए कही थी. नहीं, मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा. मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे. ये उम्मीद से मैं आया था. यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है. तो कम से कम ये आज खुशी का दिन है. वो हमारे संजय सिंह को और चड्डा को कम से कम हाउस में लाए. नहीं तो दो मेंबर को बाहर, सर 2 मेंबर को बाहर रख के अगर पहला दिन इम्पोर्टेंट दिन स्पेशल सेशन हाँ अमृतकाल नहीं, अमृतकाल तो कहो, मेरे लिए विषकाल तो कहो, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता. तो आप जरा कृपया ध्यान से आप करेंगे और बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए, कार्रवाई अच्छा चलने दो. Honorable members, we are having discussion on a very important issue and it will be for 6-hour discussion and everyone will get an opportunity. Apart from the floor leaders, we have presence of very distinguished members who have seen more than 3 decades of parliamentary performance. I am quite sure, and I have no doubt, the contribution by honorable members will enlighten the people at large. And therefore, let us have a scholarly debate dictated only by decorum and contribution. I call upon Leader of the House, Piyush Goyal, to me. Sir, it's a special sessions or 261st session of Rajyasabha. Which one is Will correct? the special sessions be counted as a session? Kindly please enlighten, then I think we Okay. So, it is 261st session, is special session. Mr. Piyush Goyal. Mr. Piyush Goyal. माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पे इतने अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं. सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से सभी साथियों को, सांसदों को और देशवासियों को हम सब की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं. माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट महामहिम राष्ट्रपति जी,
और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का एक तीनों का समागम है। हमारा हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाते हैं, उच्च सदन कहा जाते हैं। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्र लोकतंत्र की जननी में मुझे इस उच्च सदन में अब तीसरे टर्म में सेवा देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। और जो सीखा, जो समझा, जो काम करने का अवसर मिला, उसके ऊपर आज की जो चर्चा है, ये वास्तव में हम सबको और ज़्यादा उत्साह देगी आगे के लिए भी, कैसे हम देश के निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी जो लोकतंत्र है ये एक प्रकार से प्रेरणादायी है, हम सबको प्रेरणा देती है। हमारा जो संविधान है ये हम सबको और इच्छा शक्ति देती है। और पार्लियामेंट जो देशवासियों की उमंग है, जो देशवासियों के संकल्प हैं, उसको साधा करने का सबसे सही इंस्टीट्यूशन है। लोकतंत्र को जीवित रखने का, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अगर कोई सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है तो वो हमारा संसद है। माननीय सभापति जी, इस देश के जनता 140 करोड़ लोग हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, उसको सफल बनाते हैं। भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है वो स्वदेशी आधार पर बनी हुई है। इसीलिए जब गुलामी से अलग अलग देश मुक्त हुए तो बहुत कम बड़े देश हैं जो आज भी लोकतंत्र के रूप में हैं। अधिकांश देशों में लोकतंत्र टिक नहीं पाया, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आई। पर इतने बड़े देश में गुलामी के बाद भी लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होते जाना, ये हम सबका सौभाग्य भी है और उसमें दोनों सदनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत, जिसको हम सब लोकतंत्र की जननी मानते हैं, इसमें पुराने वैदिक टेक्स्ट में भी जाते हैं तो वहां भी ये शब्द देखने को मिलते हैं। सभा, समिति, संसद, ये शब्द हजारों साल पहले भारत में कहे जाते थे, इस्तेमाल होते थे, सुने जाते थे। ये सिर्फ हमने शब्द नहीं यहाँ पे लिए हैं, उसकी आत्मा भी आज सदन में, लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिलती है। और मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी माननीय अध्यक्ष जी G20 की भारत की अध्यक्षता की सफलता की बात कर रहे थे। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में, कि हमारे लिए देश ही नहीं पूरा विश्व एक परिवार है और हम सबकी चिंता करने वाला देश है, ये जो भावना लेके भारत की G20 की अध्यक्षता बहुत सफलतापूर्वक अभी अभी समापन हुई है और लीडर समिट समापन हुआ है और नवंबर 30 को हमारी अध्यक्षता का समय पूरा होगा। हमने अवश्य पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है भारत की अध्यक्षता की, भारत के नेतृत्व की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में एक एक्सेप्टेंस बनी है, उनकी लीडरशिप के प्रति जो आस्था देखने को मिलती है, वो पूरे देश को, देशवासियों को गौरवान्वित करती है। माननीय अध्यक्ष जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा आयोजित हुई थी, उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं तो देखने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तब कहा था कि 2 सदन की आवश्यकता क्या है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि माननीय श्री मोहम्मद ताहिर, माननीय श्री शिबन लाल सक्सेना, माननीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने ओपोज किया था कि 2 सेकंड चेंबर की आवश्यकता नहीं है, एक ही चेंबर बहुत होगा।
लेकिन माननीय श्री गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था कि 2 सदन होने चाहिए, उच्च सदन का अपना स्थान है। और उसी के बाद अप्रैल 1952 में 1952 में ये सदन बनाया गया और इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई। तो एक प्रकार से इस 71 वर्ष का जो प्रवाह है उसकी चर्चा आज हम सब करने वाले हैं। राज्यसभा की सामान्यतः ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे और चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से और एक प्रकार से वाद विवाद से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी जो भी डिबेट होती है, जो वार्तालाप, डिस्कशन, डायलॉग होते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज पक्की है कि हमारा जो शपथ है, देश की सेवा करने का शपथ और देश के हितों को रक्षा करने का शपथ, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सर्वोपरि रखेंगे। और मैं समझता हूं उसमें हम सभी ने अपना अपना दायित्व अपने हिसाब से निभाया है। इस 71 वर्ष की प्रवाह में कई सारे महानुभावों ने भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। हमारे कई सारे वरिष्ठ चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, सभी का नाम ना लूं लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम तुरंत ध्यान में आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जस्टिस हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्री के.आर. नारायण जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और अब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में इस सदन की गरिमा बनाई, सदन को और नए आयामों पर तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। वेंकैया नायडू जी की तो बात याद आती रहती है तो कई बार व्यंग भी करते थे, कई बार विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, पीपल वांट द हाउस टू डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड 3 Ds. They do not want the other D, that is disruption. और मैं समझता हूँ कि हम सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है कि सदन अच्छी तरीके से चले और सदन में अच्छी चर्चा के माध्यम से हम देश की सेवा कर पाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जनता के प्रतिनिधि, कई सारे हमारे मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, बहुत वरिष्ठ महानुभावों ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है और अपना अपना छाप छोड़ी है कि कैसे उनके समय में इस सदन ने काम किया। आज भी हमारे जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, एक से बढ़ के एक अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बहुत देश सेवा की है, बहुत बड़ा योगदान किया है। और मैं समझता हूँ ये भी इस सदन की एक विशेषता है कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो खेल की दुनिया से हो, चाहे आर्टिस्ट हों, फिल्म के दुनिया से, म्यूजिक की दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से, अलग अलग बड़े बड़े महानुभाव ने इस सदन में की गरिमा बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए हैं जो जिंदगी भर और देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और शायद सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे। कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी सदन में हुई हैं, चाहे वो अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी की डिबेट्स हों यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह जी या वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी या हमारे वर्तमान में सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री देवे गौड़ा जी की हो। अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स में बड़े बड़े महानुभावों ने भाग लिया है। कई बार बड़ी फियर्स डिबेट्स होती थी, वाद विवाद भी बढ़ जाता था, लेकिन साधारणता
बहुत गंभीर वाद विवाद में भी मौका लेके ये रहता था कि कैसे ना कैसे हम सब मिलके काम करें। एक बार एक बहुत गर्मा गर्मी की डिबेट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आह्वान दिया था कि हम सब राजनीतिक दल मिलजुल के काम करें, अपने अलग अलग जो सोच है, विचारधारा है, उसको रखते हुए भी हम रास्ता ढूंढ के इसमें से आगे चलें और देश हित और जनहित के लिए हम अपना अपना काम करें। मुझे याद आता है माननीय अध्यक्ष जी, एक सदस्य थे सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के, श्री पी राजीव, फिर जाके केरल में मंत्री बने, सीपीआईएम के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते थे सर, और नई नई चीजें जो लगभग हम में से कई लोगों को ध्यान नहीं था कि इस सदन की भी अधिकार क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐसे ऐसे नए नए विषय कई बार श्री पी राजीव लाते थे। मैं उनको अभी भी मिलता हूं तो आनंद आता है, चाहे केरल में हो, चाहे कभी वो दिल्ली आए। और इसी प्रकार से अगर हम सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, हम हमारे में मतभेद हो सकता है, पर अगर हम मतभेद से ऊपर उठें और मतभेद को शालीनता के साथ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहाँ पे एक हमें उदाहरण के रूप में अच्छी अच्छी बातें दिखाई, और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को तेज गति से आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1955 में एक बात रखी थी और मैं कोट करना चाहूंगा। ये 1955 की बात है, यानी वी आर लगभग 68 साल पहले की बात आज भी इस सदन में गूंजे तो कितनी रेलेवेंट होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, वी वांट टू मेंटेन गुड नेम एंड डिग्निटी ऑफ दिस हाउस। आई डू नॉट वांट इट टू बी सेड that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible MPs, but rather like irresponsible professional agitators. अलग अलग तरीके से अपने वरिष्ठ नेताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सबकी भावना और हम सबका मन यही बोलता है कि सदन अच्छी तरीके से चल के इस देश में नई नई चीज़ें कैसे इस देश को और आगे बढ़ाएं। इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक आह्वान दिया है कि भारत एक विकसित देश बने, उसमें हम सबका अपना अपना रोल रहेगा। विपक्ष का भी उतना ही अहम रोल है कि वो नियंत्रण में रखे सरकार को, सरकार का रोल है कि वो नए नए कानून, नए नए योजनाएं, नए नए तरीकों से देश की दिशा और दशा आगे बदले। और मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य भली भांति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास कर भी रहे, आगे भी करते रहे। कई बार अगर मेमोरी में जाए तो अटल जी की जो कविता सुनाने की आदत थी, कई बार वो कविता में चल पड़ते थे। माननीय अरुण जेटली जी जो लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उसके पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, उनका कटाक्ष बड़ा शार्प होता था और अपने तरीके से बहुत विटिली, बहुत अच्छी तरीके से वो विषय को रखते थे। जैसे उन्होंने कहा था, दिस इज द न्यू नॉर्मल। इस प्रकार के अलग अलग उनके भी हमारे पास बहुत सुंदर यादें हैं। माननीय वेंकैया नायडू जी के तेलुगु में प्रोवर्ब्स देने की आदत थी, बीच बीच में वो याद करते थे। माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी शेर व शायरी में काफ़ी माहिर थे, निकल पड़ते थे। कई बार माननीय खड़गे जी भी आजकल शेर व शायरी बहुत करने लग गए हैं। पर ये सदन की गरिमा रही है कि हम सब कई बार गर्मा गर्मी में भी विषय को बहुत सुंदर तरीके से संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी से लोगों का दिल भी जीतते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद जी को उनकी टर्म खत्म होने पर फेयरवेल स्पीच में याद किया था, उन गुलाम नबी जी का और प्रणब दा का, माननीय पूर्व
महामहिम राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी जी का जो काम सरकार में रहते हुए, एक विपक्षी सरकार गुजरात में थी, उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने गुजरात के लोगों को कश्मीर से पुनः वापस जाने के लिए मदद की जब आतंकवाद चरम सीमा पे था। उस समय के जो अनुभव प्रधानमंत्री जी ने यहीं से बताए थे, एक प्रकार से हम सबको एक संदेशा देता है कि हमने सबने अच्छी बातें याद करके अच्छी चीजें करने के लिए अपना अपना प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो वास्तव में ये भी कहा था कि मैं सैल्यूट करता हूं गुलाम नबी आजाद जी को और आगे भी मैं आपसे सलाह मशुरा करते रहूंगा। और यही एक मित्रता की भावना से हम सभी सत्ता दल या विपक्ष इस मित्रता की भावना से आगे भी काम करते रहेंगे, ये हमारा सबका विश्वास है। और एक प्रकार से सदन की गरिमा उसी में होगी कि हम देशहित और जनहित को अगर सर्वोपरि रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सदन की भी गरिमा बढ़ते जाएगी और अच्छा काम होते जाएगा। वैसे मुझे याद आता है जब मैं पहली बार मेडन स्पीच देने के लिए उठा था, मैं नया नया सदस्य था, जुलाई 2010 की बात है और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जहां अब बैठे उसी के बाजू में नासिर हुसैन की सीट पे, जहां तक मुझे याद है मैं वहां पे बैठा था और माया सिंह जी हमारी चीफ विप थी, आई बोला कि परसों तुम्हें I.N.D.I.A और सेबी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब दा वित्त मंत्री थे, तुम्हें उसकी डिबेट को शुरू करना है। और मैं एकदम हैरान हो गया, 2 ही दिन हुए थे मुझे सदन में आए, शायद तब तक तो कुर्ता पजामा और जैकेट भी नहीं सिलवाया था, जब माया सिंह जी ने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हें ये डिबेट शुरू करनी है। और मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, मैं उसी दिन रात को मुंबई गया क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरे लिए नया था, इंश्योरेंस या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सेबी तो समझता था, फिर भी तो वाद विवाद समझने के लिए पूरे 2 दिन, उस दिन से लेके अगले दूसरे दिन तक दिन रात रिसर्च करते रहा और पूरी समझी कि क्या ये विषय है, क्या समस्या है, क्या विवाद है। और इसके मुझे फायदा भी हुआ, उसमें मुझे कई चीज़ें मालूम पड़ी कि जो निजी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज होती हैं वो कैसे एक तरफा होती थी उस समय। मुझे विश्वास है अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा, पर नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आनी शुरू हुई थी और एक तरफा पॉलिसीज होती थी। तो उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ तो ये हुआ कि मैंने कई मेरी पॉलिसीज कैंसिल कर दी जो निजी कंपनियों की ली हुई थी, जब ध्यान में आया कि कैसे वो हमारे खिलाफ, उपभोक्ता के खिलाफ जाती थी। और फिर मैंने मेडन स्पीच जो दी, उस समय मेडन स्पीच में समय का सीमा नहीं होती थी, तो काम लगभग 30-40 घंटे मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो स्पीच भी लंबी चली, लगभग 40-42 मिनट तक मैंने अपनी बात रखी। पर उसका इतना समाधान मिला जब उस समय के माननीय वित्त मंत्री ने उस स्पीच के बाद जब डिबेट पे रिप्लाई कर रहे थे, एक प्रकार से कुछ वाक्य लेके, मैं वाक्य पे तो नहीं पूरा पढ़ना चाहूँगा, पर उन्होंने जिस प्रकार से मुझे अप्रिशिएट किया, जिस प्रकार से मुझे एनकरेज किया, वो वास्तव में मेरे लिए, मेरे स्मरण में जिंदगी भर रहेगा। और उस समय उनकी बात में जो भाव था, जो एक प्रकार से एप्रिसिएशन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैंने विषय को रखा था मेरी मेडन स्पीच में और पूरे सब्जेक्ट को स्टडी किया था, वो आगे चल के मुझे पार्लियामेंट की सेवा करने में मदद करेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था, दिस इज द चेम्बर, दिस इज द सिस्टम वेयर वी एग्री टू डिसएग्री, देयर विल बी डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज, देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एंड थ्रू दीज डाइवर्जेंसेस, थ्रू दीज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, थ्रू डिस्कशन वी विल अराइव एट अ सोल्यूशन। ये उनका वाक्य मेरे लिए जिंदगी भर एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि कैसे हमने आगे चल के
अपनी अपनी बात भी रखनी है, दूसरों की बात से भी सीखना है। मुझे याद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं सामने, एक बार एक कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल हुआ था, उसके ऊपर बड़ा गंभीर चर्चा भी चल रही थी। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने उर्दू के शायर मिर्जा गालिब जी को कोट किया था, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और उसी समय तुरंत माननीय सुषमा स्वराज जी जो उस तरफ बैठी थी, उन्होंने जवाब में कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये जो भावना थी दोनों तरफ, ये वास्तव में इस सदन की गरिमा बढ़ाती थी। और ये है जो छाप, मैं समझता हूं जो यादें हम यहाँ से लेके जब नए सदन के नए प्रांगण में जाएंगे, नए वास्तु में जाएंगे, तब ये यादें लेके मैं समझता हूं हम सभी प्रयास करेंगे कि और अच्छी तरीके से हम आगे अपना अपना काम कर सकें। अटल जी ने एक बार मई 1996 में अपने भाषण में, एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण में कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब ने कभी ना कभी रिकंसाइल करना पड़ेगा कि परिस्थितियां बदली है और हम कोई भी एंटाइटल नहीं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कई जगह पे देखने को मिलता है, कई जगह पे अनुभव होता है, उससे जब देश उठेगा तो मैं समझता हूं हम सही माने में देश की सेवा में और अच्छा काम कर सकेंगे। छोटी छोटी प्रतीक होते हैं, जैसे लाल बत्ती खत्म कर दी गई थी सब मंत्रियों की, छोटे प्रतीक, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देश को कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी के लिए भी इस देश में अब नहीं चल सकता। 2014 में हमारी सरकार बनी, वो भी एक ऐतिहासिक मौका था कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ देश ने चुन के भेजी थी। कई सारे बड़े लैंडमार्क लेजिस्लेशंस पास किए गए हैं इस सदन में 2014 से अभी तक, जिसका देश की विकास यात्रा में और सामाजिक समरसता, समाज को और आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि 9 वर्ष का समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, देश के बदलाव का समय रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी के नेतृत्व में, और हम सब ने एक प्रकार से उस प्रवाह में 100 वर्ष लोकतंत्र के मनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिया, सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए सामान्य रहे, और जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करने का तीव्र इच्छा शक्ति थी, इच्छा था, काम था और प्रयास था, उसको हमने उस दिन पूरी तरीके से संपन्न करके देश को एक बनाने का काम पूरा किया। वैसे तो जब आर्टिकल 370 लगा ही था, तभी उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि ये तो टेम्पररी प्रोविजन है, कुछ वर्षों में निकल जाएगा,
और कुछ समय लगेगा जम्मू कश्मीर को अपना खुद का भविष्य भारत के साथ अच्छी तरीके से बनाने में। वो कुछ समय थोड़ा लंबा समय हो गया, पर हम सबके लिए आनंद की बात है कि हमने वो निर्णय 2019 में लिया। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती हैं जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का विषय था। कितने सुंदर तरीके से लगभग सबकी सर्वसम्मति से और एक साथ मिलजुल के ये 3 नए राज्य बने। 3 नए राज्यों को एक अपने आगे का भविष्य तय करने का मौका मिला और कंसेंसस के साथ पीसफुली ये डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से ये तीनों राज्य बने। थोड़ा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे हम ऐसी सर्वसम्मति नहीं बना पाते, और मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम शालीनता से अपनी अपनी बात रख के आगे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे याद है, मैं भी इस सदन में था जब तेलंगाना का नया राज्य बना। वो दृश्य शायद एक भद्दे के रूप में, एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में इस देश के स्मरण में रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे नए भवन पे कभी ऐसा दृश्य देश और दुनिया को देखना ना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में एक ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे वन नेशन वन टैक्स स्थापित हुआ, और ये इसलिए ऐतिहासिक कहता हूं क्योंकि लगभग एक प्रकार से इसमें भी सर्वसम्मति से बना था। पूरे देश की सम्मति, देश के हर राज्य ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया, और वी आर द हाउस ऑफ एल्डर्स रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स विशेस एंड डिजायर्स। तो इस प्रकार से सभी राज्य मिलके हमारे पास ये प्रस्ताव लाए, और वो जो 2017 का दिन है, ऐतिहासिक मिडनाइट सेशन 30 जून 1 जुलाई की रात को 2017 में सेंट्रल हॉल में हुआ, और आज उसका लाभ पूरा देश अनुभव भी कर रहा है। व्यापार उद्योग को नया बल मिला है, बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। कई सारे ऐसे निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, वो एक विषय रहा जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, और पार्लियामेंट ने उसको पास करके एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक को जब क्रिमिनलाइज किया, उसका कानून 2019 में लाया गया, हमारी बहनें माताओं को अपना सम्मान मिला, और एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म का मेजर था जिसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। और इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए ये सरकार तत्पर रही है, और लगातार एक के बाद एक 9 साढ़े 9 वर्षों में इतने सारे बड़े निर्णय हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए इस देश में किए गए हैं। राइट फ्रॉम द डे वन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके आज तक और भविष्य में भी भारत हमारे बहनों को और अच्छा सम्मान मिले और अच्छा स्थान मिले। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में बहनें काम में आ रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स, और भारत की अर्थव्यवस्था में भी और भारत की आगे के भविष्य में उनका योगदान बढ़े। ये मुझे लगता है हम सबका प्रयास है, हम सबका इच्छा भी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ थोड़े खराब हमारे सामने उदाहरण भी है जिससे सीखने को मिला। जैसे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, उससे हम सबको और ज़्यादा चौकन्ने रहना पड़ेगा, और सुरक्षा के जो प्रयास किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी जो अपना काम करते हैं, सुरक्षा हमारी और हमारे देश की आन बान और शान संभालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी काम करते हैं, मैं समझता हूं उसमें हम सबका भी योगदान हो, हम भी कोऑपरेट करें, और हम भी थोड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ऊपर उठ जाएं, तो शायद हमारी भी सुरक्षा और देश के सम्मान की सुरक्षा और अच्छी हो पाएगी, और 2001 जैसे अटैक कभी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद हमने एक पूरे देश को संदेश, एक यूनिटी का संदेश तो दिया कि हमारा लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता, आवर डेमोक्रेसी इज इनविंसिबल। परंतु मुझे लगता है इसको पुनः हम स्मरण करते रहे और आगे भी
कभी हमारे देश की एकता और एकजुटता पे कोई आहत नहीं आए, ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक बहुत आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से विकास की प्रवाह में आगे बढ़ रहा है। इसमें कई सारे मौके आते हैं हम सबको, जिसमें एक आवाज से देश हित और जनहित को हम आगे लेके जा सकते हैं। और मैं समझता हूं जो हमने पुराने लेसन सीखे हैं उससे हमें आगे के भविष्य को बनाने में और अच्छा बल मिलेगा। जैसे कि जब इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया गया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। और बाद में तो कई सारे मौके आए जिसमें सदन ने भी और कोर्टों ने भी भारत की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे आज़ादी के, हमारे संविधान के, उसको कोई आहत ना पहुंचे उसके लिए कई सारे कदम हम सब ने और देशवासियों ने उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे ऐसे कानून थे जो पुराने गुलामी के समय से चले आ रहे थे। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उन कानूनों को भी बदला जाए, उनको कंटेम्प्रेरी आधुनिक बनाया जाए, आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में कैसे वो रेलेवेंट हो, उसके लिए प्रयास सभी सरकारें करती हैं। कंपनीज एक्ट पहले 1956 में था तो पूरी तरीके से लाइसेंस राज को बल देता था, उसको बदला गया 2013 में और कई सारे मेजर्स लिए जिससे उद्योग व्यापार को और बल मिल सके। उसमें भी समय समय पे कई सारे और बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं, जिससे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को हमने अपनी प्राथमिकता बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, ये भी अपने आप में देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है। ये हम सबका सदन, आधुनिकता से पूरा युक्त और आगे भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने वाला ये नया वास्तु, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक भारत के लिए एक नई उत्साह और उमंग के साथ आगे जाने का एक संदेश पहुंचाएगा। ऐसे ही पिछले 2 महीनों में भारत मंडपम, जो पुराना प्रगति मैदान था, और एक द्वारका में स्थित नया यशोभूमि, 2 और बड़े सेंटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये दोनों नए भारत के प्रतीक के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे। अब हमारा देश विश्व स्तरीय फेयर्स, एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस कर पाएगा और उसका हमने जीता जागता एक स्वरूप G20 लीडर्स समिट में भी देखा। ये सब निर्णय अब इस देश को आगे लेके जाने के लिए समावेशी और एक प्रकार से पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरा करने के लिए सबका प्रयास है और हम सब मिलके इस प्रयास में जुड़े, देशवासियों का विश्वास जीते और देशवासियों को एक कर्तव्य भावना से जो 5 फ्रंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से दिए थे कि हम सब 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना से देश की एकता और एकजुटता को संभालें, देश को गुलामी की मानसिकता से निकालें। हमारे इतिहास से जो सीखने को मिला है, जो हमारे इतिहास में, हमारी परंपराओं में, हमारे जो रिच कल्चर और हेरिटेज, पारिवारिक वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन सब से जो हम सीखते हैं उस सब को कर्तव्य भावना से आगे लेके जाएं
नारी शक्ति का सम्मान करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लेके आगे चलें। इस इच्छा के साथ इस सदन में भी ये आज का विषय हम सब चर्चा करें। हम सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो हम सबको याद दिलाता रहते हैं कि आगे चल के भी ये सदन अपनी गरिमा रख के, इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ हमें सीखने मिला। हमारे सबके अपने अपने अनुभव रहे, अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब हम पुराने दिन इस सुंदर सदन में याद करते हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण कक्ष में जो पल गुजारे हम सब ने मिलके, उन सबको जब यादगार के रूप में हम संवारे। लेकिन जब नए भवन में जाते हैं, नए वास्तु में जाते हैं, नई सोच के साथ इस देश की दिशा और दशा को नया रूप देने के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सब संकल्प लेके प्रतिबद्धता के साथ नए सदन में प्रवेश करेंगे कल। उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नए सदन पे शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पीयूष गोयल जी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे आप जल्द बुलाए और अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे और इसीलिए मैं कहूँगा
कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था, यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे यह अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था, बुनियाद रखना। और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं।
आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माननीय खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ देखिए, नींव भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत से लेकिन देखते हैं। दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा, सर बोलने आश्चर्यचकित हो गया। सर बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है, वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं, और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ, और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है, पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के, तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट, और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े और ये दिलाए, और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो,
अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर गए। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता, एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। चुपी ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं, ये बार बार यही बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल, अब ये टी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ?
वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए हैं। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि EWS के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे
वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी, बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर? ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, ये नहीं, देखिए जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके, देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको कुछ कह के, झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं।
सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं, तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा नेहरू जी के विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप कोशिश तो मैंने की थी, नहीं आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब, नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए। सर, शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना, आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मेरी मजबूत बात को मानते तो नहीं साहब। लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साहब, मणिपुर डेमोक्रेसी पर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक, अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई बोली। सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं। सर, वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर, पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैं नहीं बोला। नहीं, माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था,
लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर, सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर, दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ, कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं वो कितना आवश्यक है। I am not in defense of anyone, but I am on hard facts. मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब, नहीं साहब, सुनो, नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं, have full update on this and No. inform leader of the opposition नहीं, in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे, जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? In how many years? देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर आप रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर ठीक दिया है, है, मैं वो उनसे फिगर आपको पूछिए भेज दूंगा। कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, सर, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। वो फिगर दे दूंगा। ऐसा नहीं बोलो। ये Have क्या है? respect for your leader. ये चुप बैठो भाई। तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर, सर, पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became the कानून first बनाने chairman के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए।
इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज़्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीज़ें संवैधानिक ये मुख्य है, और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है, और आप हमारे गार्डियन हैं, और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे, और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे, और बहुत से नेता बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूँ 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी, और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को
आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं नहीं नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब, कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते। लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर, मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश में चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर, 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं। लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही हैं और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर,
राज्यसभा में इस जगह बैठते थे। तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर, ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात दो चार रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है, और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीज़ें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है, क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, नहीं नहीं दूर दूर तक चले गए। साहब, ये तो मैं समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज आएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे देखो साहब, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। ही हैज यील्डेड, ही हैज यील्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Microsoft's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। So why are you commentating on his speech? जयराम जी, जयराम जी, Let him finish. this is not a good habit. Let him finish. No, you are a victim of this habit. Let him finish. Don't have this habit. Don't have this habit. No, this is not a.
when the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen You to can't be. He doesn't need him. You assistance. want to listen to him. No, no. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Every time, I have no desire to sit there. But I even have if to you have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting please, him, sir. please, take your seat. So, Manya Kharge ji, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25, 50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you are focused on two things, sir. I find it. You and him, sir. This is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. The problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sir, this is wrong. This is wrong from your part, sir. Sir, this is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Misleading, sir. Don't do that. You are misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very partisan attack. Remark from you, sir. Sit down. Sir, please I explain your have own said, statement, sir. one second, I request you to one explain second, your own Jairam, statement. take it. Sir, please Everybody is explain your own cooperating statement. today. Take it. You are misleading the house, sir. No. You are not debating here, Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी एक सेकंड प्लीज अरे बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum discipline. One second. Sir, please don't cast aspersions on us. One second. सर Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater सर a मैं तो most खत्म करता important हूँ message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर थैंक यू सर क्या टॉलरेंस है अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर सभापति जी मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर सभापति जी, दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है.
1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा, वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है। वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, और इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड। हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन देखो। लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परिस्थिति के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परिस्थिति के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार किस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move
for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ G20 का मैं भी G20 में शामिल हो गया लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया अमेरिका गया इटली गया ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने ब्राजील गया लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना देश के बारे में मैं पहले ही बोला देश के विषय में देश का जब भी कोई ये आता है हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ नहीं देखिए माननीय खड़गे जी मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है आवर अटेनमेंट इन 6 years is something which can't be attained in 50 years. Shri Mohammad Nadimul Haq. Sir, thank you very much for giving me the chance to speak on this issue. 4 minutes. Time allotted. So thank you for by limiting. Your party. Thank you for limiting me also, sir. Sir, the word federal is not mentioned in the Constitution even once. Yet, it is the spirit and soul of this country. Remember that this is not the House of Elders. It is the Council of States. Do not do anything that will hurt federalism. Do not do anything that will compromise the states. Do not assault federalism. Federalism is our nation's precious asset. So depriving the state of funds is a threat to democracy. Let me give you an example of my state, Bengal. Laborers who worked under Manrega from 2021 till now have not been paid their wages, amounting close to 4,000 crore rupees. If we include the non-wage component, the amount goes up to 7,000 crore rupees. Sir, Madam, 11 lakhs 36,000 beneficiaries have been denied the Gramin Awas Yojana. Under different schemes, the union government has blocked tens of thousands of crores to Bengal. This is not federal. This is against the states. 75 years ago, Dr. B.R. Ambedkar said, and I quote, "The Indian Constitution is a federal constitution in as much as it is established what may be called a dual polity, which will consist of the union at the center and the states at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution." Unquote. Remember that the double engine government that you propose is against the federalism that our founders envisioned for this country. It is against the very spirit of India. Sir, Madam, today in 2023, I quote Arundhati Rai, and I quote, "It is no longer just our leaders that we must fear, but a whole section of the population. The banality of evil, the normalization of evil is now manifest in our streets,
in our classrooms, in very many public spaces, the mainstream press, the hundreds of 24 hours news channels have been harnessed to the cause of fascist majoritarianism. India's constitution has been effectively set aside. The penal code is being rewritten. Unquote. Madam, in conclusion, I must say that India's equilibrium depends on fair play. Do not penalize those states that have done better in successful implementation of schemes, but oppose you politically. Political parties come and go. Prime ministers will come and go. But India, its parliament and its constitution will remain forever. Thank you very much. Shri R.K. Rajesh Kumar. Vikramji. Sakrim Patra. Going through a change, ma'am. We'll come in the second sequence. We'll come little later in the sequence. We come little later in the sequence. Shri Amar Patnaik ji. S.K. Niranjan Reddy. क्या? रामनाथ ठाकुर एब्सेंट शक्ति सिंह गोयल. थैंक यू मैम. सर क्या लंच कर मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि हम जिस तरह से संसदीय परंपराओं की, प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं, तब मैं तो गुजरात से आता हूं जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलेंकर जी, जिसे मावलंकर दादा के नाम से पहचाना जाता था, वो उस थे महाराष्ट्र से, पर कर्मभूमि गुजरात की होने के नाते गुजरात में एक बहुत बढ़िया परंपराएं वहां बनी और उसी को चलते देखते हुए आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी उसके वहां ईडी, सीडी, सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी ये थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हाँ बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक
आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा, बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां, शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को, पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए बाप ने थप्पड़ लगा दी, क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है, उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहां पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा मिली, बाबा साहेब आम्बेडकर की उस स्पीच को देखना होगा। मैं तो सभी आपके जरिए सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा और धन्यवाद करूंगा स्पीकर मीरा कुमार जी का, उस कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का, जिसने पूरी संविधान सभा को एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत अच्छी फिल्म की तरह बना के रखी। मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैम, ये जो आम्बेडकर जी ने जब ये बात रखी संविधान सभा के अंदर और कहा कि हमने जब ये संविधान सभा शुरू की, मैं मेंबर बन के आया था ये समझ के कि कुछ दलितों की 2 बात कर लूंगा। मुझे ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना, मुझे और ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जब ये सारी चीजें पास हुई तब मुझे और ताजुब हुआ। पर मैं इन सब चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन को मानता हूं, उसको श्रेय देता हूं। और एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं कि जब ये कहते हैं नेहरू जी के लिए, मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो लफ्ज नेहरू जी के लिए कहे थे, कम से कम उसको एक बार पढ़ लेना, उसको एक बार दिल से लगा लेना। वो बोलने वाले विपक्ष के नेता थे वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था नेहरू जी के लिए, उसको कम से कम याद कर लेना। तो फिर आपको नेहरू जी के खिलाफ बोलने की कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी। मुख्तर सी जिंदगी है, अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, वक्त की पाबंदी है। इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। डॉक्टर M.K. थम्मेतुरई। Madam Deputy Chairman, 3 मिनट है आपका। I rise to participate. 3 मिनट। 3 minutes I can, what can I say? I don't know. Madam, as some members expressed, this is not a elders' house. This is a Rajyasabha. Representing the states representatives, we are come over here. To see the federalism has to be established. That is the history. For that only this house is there. I served as 5 times Lok Sabha member there, and also 2 times Deputy Speaker of Lok Sabha and presiding officer also. 15 years I done that. That the history is there. I want to say, first of all, Madam, in this house, our founder, Dravidian party leader, Per Anna, came here and sat in this house. He fought, he's a single member at the time, Dravidian party came at the time. Then 2 Lok Sabha members at the time. Now, afterwards, the development took different way. My leader, Purachitalavi Amma, created history, Indian history,
bringing 50 members of the parliament, 37 member Lok Sabha member, 13 Rajya Sabha members, like that 50 members we have developed in this history. In the parliament, 37 Lok Sabha member, the highest number we got the Dravidian party, then 13 members here Rajya Sabha, that total 50 members we started. When we Anna started for number 1 and took, like that history took place. Madam, when Anna was here, he fought for the federalism under the language issue. Because here the language is one of the important issues we are discussing. Every time the federalism is not respecting the regionalism, especially for Tamil Nadu, we are all fight for our language. Where Anna said, we want Tamil has to be made as the official language of this country. That is the spirit of the thing. Not only Tamil, whatever the 8 scheduled languages, all the language must be the national language of this country. That is what he raised here. We don't know what he is going to implement and going to achieve. Madam, at the same time, I want to make some other points. Then afterwards, our democracy has developed. We have 1967 onwards, our only regional parties are ruling Tamil Nadu, but national party cannot enter. That is the situation is taking place. Because the regionalism is also important. That is why we are representing in the Rajyasabha the rights of the states. The states are treated some kind of stipend treatment, and they are not able to get sufficient men. During my present General Secretary of I.N.D.I.A, Edappadi Palniswamy, was the Chief Minister. He raised many occasions. We wanted more funds from the state, but we could not get. But in spite of that, he ruled very well and got the good name. 4 years he established a good government in Tamil Nadu and became appreciated by everyone. Why I am telling? Because even though we are now some limited members in the Rajyasabha, we are still fighting for our Tamil Nadu people, for Kaveri issue, like the important issue which is suffering now, the Kachetu issue. They, in spite, without approval of the parliament of the both houses, the 1972, 74, 75, at that time, the Congress people only given the Kachetu to the Sri Lanka government. Still, it is part of our India. It is not approved by this parliament. We are fighting for that. I.N.D.I.A is fighting for that. Our Amma, I went to the Supreme Court and filed at the time. This Kachetu is a part of our India because our Tamil fishermen is suffering that. This kind of rights we have to fight, and this history we are going fighting, madam. Madam, and also, apart from that, now we are facing so many problems, but the parliament also were raised regarding, for example, take pandemic situation. At that time, we all united together how to solve this problem. Our Prime Minister, Narendra Modi ji, successfully has done so many wonderful things. And also state government, Edappadi Palniswamy, during this period, he implemented a lot of schemes to save the people of India. Because central government also gave a lot of assistance to the state government, this cooperated with us. With the help of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Edappadi Palniswamy, done excellent work at that time as a democratic way, because the history shows how the parliament is functioning and how we are playing the game for the welfare of the people. Therefore, even though the building is, we are seeing that sometimes they say it is built by British people. It is not. It is our Indian property we are having here. Even though we were moving from this building to another building, the site is also on the same area where the British people established our building. It's not somewhere not removed from this place to any other place. Therefore, convenience sake only we are moving to that place. I am appreciating our Modi ji has come forward to establish a new building to accommodate more members and also with the good facilities. For that, we are going to move that building, not any other sense. Therefore, democracy in the 75 years, we have come
journey, we have so much journey, so many obstacles we had, so many times we have tried so many issues in the parliament also. At the same time, madam, I am very grateful that you have given sufficient time also. But still I am going insisting that federalism must be protected and giving the more rights to the states, not only Tamil Nadu, other states also. And also a request, whatever Anna raised the issue, make all Tamil my language and other Telugu and other Malayalam and other Marathi, other all languages, especially the official language of the country. That is the spirit we have to see for whatever we got for freedom. This is the highest of our parliamentary system. In the journey, we are risking to respect the states and culture of the various states, where Narendra Modi ji always praising Tamil and other things. Same way, we are requesting the parliament has come forward to see that the languages, all the languages of the A schedule must be said, languages of the national, that is one of the things. That is the spirit of the democracy and also federalism. That is the parliament which we have to make the thing. Once again, I thank my leader, MGR, President MGR, sent me the parliament and has made him a deputy speaker at that time. Rajiv Gandhi was at that time prime minister. Afterwards, Amma made me the central minister in Vajpayee government. And afterwards, and Modi ji and also Amma made me deputy. Once again, 2014. And this kind of experience I had made throughout life. Had the opportunity to serve this parliament. And hope that this spirit of the parliament democratic system has continued. We know because whatever the opposition people raised in democracy, there must be some kind of opposition will be there. The ruling party also, they want to say, implement their programs. Therefore, both has to come together. There must not be any difference between them. Because government, the ruling party has to say to implement, that is why they elected, they have to implement program. Opposition can raise it as a discussion, must not disturb the things. Therefore, this kind of democracy has to continue. The parliament, 75 years after freedom we have done, as I said once again, as our forefathers thought that federalism must be very important, because we are speaking, it is Rajyasabha, it's not an elder's house. It is not, I am not an elder man. He may be elder man, he is not elder man. There are young people also there. It's not the elderly house. This is the Rajyasabha, state representatives are here. Therefore, whatever the state issues are raised here, that must be given importance. That must nullify that cannot therefore. And second, thank my leaders, President MGR and President Amma, Yadapadi Palaniswamy, my General Secretary has sent me to the Rajyasabha as a member. I once again thank all my leaders to have the opportunity. Thank you very much. Shri K. Keshav Rao. How much time you want to give me, madam? 12 minutes. 12 minutes. 5 minutes? 12 minutes. 12. 12. Thank you very much, ma'am. Whatever it is, you have the time. Ma'am, get up to speak on this 75 years. Everybody knows we have really done, we have achieved great strides of progress during this period. There is no doubt about it. I don't want to politicalize the entire thing. But let me tell you, our journey has been a tragic journey. It has a beginning. We thought of independence for a nation, but we got two nations. It would have been all right if they were two nations, but unfortunately it became two people. It would have been all right if it were two people, it had become two races. The entire world has started fighting against each other. This is one thing we could not withstand, nor could win over during the last 75 years. This really hurts me. Today, the hangover continues. Today, the people are getting identified more by their religion and caste or region than themselves. This is something the 75 years of independence could not get it. Although economically, we have done very, very good, better than many of the states. We are fast-growing nation. But this kind of divide that we still have, which the British took advantage at one time to differentiate those two people, the Hindus and Muslims, that was the divide they depended on, and is still continuing. Its shadows are still lengthening. This is something which really hurts us today when we are standing to gain out of it. Madam, to really speak,
it is not 47, it is 1930 where the Congress party declared itself as an independence and passed the resolution, and they were all over the country, the celebrations of independence at that time. Anyhow, whatever it is. But we did not have at that time, when we had partition, and when Nehru went to give his stirring speech of Tryst with Destiny, where he had said, we had promises to keep, not if totally, at least substantially. And we have really done substantially well during the past 25 years. I'm not talking about this 10 years. Even these 10 years you also might have done good. This morning we were hearing a statement made by the chairman, a resolution, I don't know in what kind it came, but it did come. It spoke very well. The wording was good. I only hope that we followed it in our country to give rise to the people's voice as you want to do it internationally, when you want all the 125 countries to do it. This should have been really good, ma'am. That is the feeling one carries along. Madam, when we think of Nehru's speech, there is some buffet in that. Nehru, after the speech, went to give his list of ministers to Governor General. You know, he went and gave an envelope, an empty envelope. There were no paper at all inside. There were no names of the ministers. It was only before 15 minutes before the real swearing in that they found the paper and found. Why I'm mentioning this is, please look at the kind of polity we had at that time. It might be Gandhiji who said, we got independence for the nation, not to the Congress. We had in that cabinet, we had people who were adversarially opposed to Congress. Absolutely, who had aversion. Who did not participate in the freedom struggle at all, 3 of them. But yet, Nehru did not have any scruples, any reservations in including them. I'm taking Ambedkar or Shyam Prasad Mukherjee, who were against the Congress and who were against the movement. They were supporting the rulers at that particular time. I'm not trying to please diminish or dilute the importance, but I'm telling you the kind of mind we had, the broad mind that time government had. It wanted to take all people, it wanted to be inclusive. That, as I said, is being lost today. In the name of, you call Hindutva, whatever it is, today majoritarianism has come as a mass mobilization movement, which is wrong. We have never thought of majoritarianism of Hindus. We knew it had 82% of people, but today it has become a mass movement. That also is something which we must still fight for. So, as I said, it was Sen who said, Amrita Sen who said, Hindutva movement that seeks to convert the religion of the majority in an identity of mass mobilization. He said secularism as it is practiced in India, to some degree the working of Indian democracy, which remains the best guarantee of Indian pluralism, have served to create the postulates of India's various particularisms. India was a particular. If you look to each decade, it had its own map. We had the second thing that we had to do after getting the independence was not only get this kind of inclusive cabinet to govern, but we had also wanted to get all people on the board. This is what exactly Congress did at that particular time, because there's no other party, so let me not talk about it. But at the same time, we had what is called the other challenges that it had to see. The challenge of language, challenge of caste, where the challenge of religion, where challenge of the states, which has turned out to be the issue of federalism, the class, rich and poor. This was very important. These are things which had to do. Then gender. Sir, I will go and first try to tell you the class approach or the class situation that we inherited at that time. Some being rich and some poor. What did we do in these 75 years?
We did not bridge it at all. We had allowed it to continue. So much so, today, in a given developing situation, it shows you more cracks than the bridging elements. This has to be understood. I'm only trying to point out it because I don't want to take much time, because we can talk much about rich and poor divide and how the 1% of people are holding the 40% of the nation's wealth. All this can be discussed, but I'm only trying to mention, because all of you in this house who have discussed these issues earlier know it better, that what exactly is the situation as far as the class is concerned. We always talk about the caste. Caste is there. The Varna system that we have inherited is something which is a debase, which is an insult to a nation. Yesterday I was trying to raise in the leaders opposition meeting something about Sanatana Dharma. Because I'm a student of Hindu philosophy. Let people sitting that side know that you are not the monopolist of the Hindu philosophy. Because Hinduism is some word which came only in the 6th century. All right, let us forget. When we talk about Sanatana, I'm talking to you because the Constitution speaks about it. The Constitution, its preamble, ensures, although it did not use the word secular, it said, when it said about equality of religions, it talked about secularism. But I should congratulate again later this government, this nation, for bringing the 42nd Amendment, wherein they made it specific, a secular, a socialist secular nation. These were the two things which were missing, although they were practicing. This nation was essentially a socialist nation. We must understand at least 64% of people were really poor. 36 below the poverty line. The word socialist meant the equidistribution of the nation's wealth. This exactly we realized, and we brought in an amendment to the Constitution itself in its preamble. This is another great achievement that we have done. Having brought that, did we do anything? Did we walk the talk? We did not. The system did not allow. Today, unfortunately, when we are trying to talk about 75 years of journey, I tell you for the last 10 or 12 years or even 15 years, let me say 91, when we thought of liberalism, even we had given, if not total goodbye, we have started diluting the importance of looking to poor and looking to the development from the socialistic angle. We had a socialistic view from the awardee session, when Congress moved the social pattern of society. Even Communist Party had to close down their shutters, because you do everything that the nation wanted ideologically came from them. And all of us who were in the schools in those days, I'm a witness to this 75 years journey, sir. Because I'm today 84, but I have seen this 75 years journey. At the time when the awardee session came, as a socialistic pattern of society, it was not, we did not talk about socialism as such, because there was a crisis at that particular time. This is a part of 75 years journey. We must understand, great debate went on, whether we should go totally on the Russian model, or should have a socialism of our own, because Raman Royaji and other socialists in this country thought that socialism can be caught for the Indian ethos. Confused by this kind of, if not dichotomy, a discourse, schism, Panditji thought we'll say same thing, but as a pattern of society. But he committed the society to develop on the basis of socialistic ethos. When he said this has come. So the third thing that we have achieved, great thing, was during the VP Singh's time. When VP Singh came, the Mandal issue was there earlier. The reservation to BCs was there in the Congress session. I was a minister during the Congress regime. We knew that we brought in 15% to 25% in states, but yet accepting at the national level as these people whom you under Varna system considered as something lower, I would not like to say,
because I resist the very word Varna. So, VP Singh is the one person who has brought this. This is something goes to the credit and goes as a feather in the cap of the Indian achievements. Sir, then we come to one unfortunate part. Is time over? Yeah, 12 minutes. Sir, we come to the part of religion. Today, as I said earlier, today we are trying to be identified more by our religion rather than by our nation. Mussolini, the great Italian writer, said, Italy we got, but Italians we not yet got it. Not that Nehru is the person who has made all of this. We were Indians. They were cynics at the time when we got our independence, like Secchi, like Churchill, like Kipling, many Dubé, who will not name them, that you get them. All of them thought that India will not be able to sustain democracy at all. It will go back to the age of barbarism, age of privation of the middle classes, and this kind of thing. But India not only sustained, not only democracy lived, but lived so well that other nations are looking to us for democracy. It is because we had a democratic tradition from the millennia. In Maurya's time, we had done run up as republics, something like 260 republics in the Mauryan Empire. What we talk today as caste was a jati at that time. We had something like 3,000 jatis at that time. But there was no kind of clash as we find today. This is how we have not been able to manage. This is a recent phenomenon. Let me also tell you. We had real communal tension, we had a communal violence, but at present it has become some kind of pride. As I said, majoritism has become an issue for mass movement, mass mobilization. So once it comes, please conclude. It really troubles you most. Sir, I come to Hinduism, I'm not trying to take on the fundamental Hinduism, because there's nothing like fundamentalism at all in Hinduism. Take it from me. Hinduism is a way of life. Anything that transcends time and space is called truth. What you say today, if after 100 years people believe the same thing, and anywhere else in the world is the same thing, it remains a truth. That is, Gandhi reduced very aspect of God as a concept and said truth is God. This is what Hinduism is all about. It is only because, not because I should believe in Rama or I should believe in Krishna. Just now, the DMK, ADMK man was telling me, in Madras we had a movement, we totally opposed it. Today we have people who don't believe. You have, if Hinduism is all that big, there wouldn't have been a need for Judaism. If Judaism is all that big, there wouldn't have been a need for Christianity. If Christianity is all that big, there wouldn't have been a need for the Islam. If Islam is all that big, there wouldn't have been a need for the Sikhism. So all this come time and space, take it. They include truth. That is what exactly Hinduism has done. I consider this as one of the greatest thought processes. Hinduism is one of the great thought processes which takes everybody through. I am a Charvaka in me. If I believe in God, I am a Hindu, sir. Your time is If over. I don't believe in God, I am Charvaka, sir. I am a Hindu, sir. If I believe in somebody who reads a good, I am a Buddha, I am a Hindu, sir. If I am Jaina, all of you are the Buddha, sir. Karnataka, yesterday I was telling the leaders of opposition, they have got their funds. They don't believe in God, they believe in Shiva, they believe in... So what is Hinduism? It is self-realization. So let us all believe that. Let not the Prime Minister of the day say that all Sanatanis should unite, as if it is a war crime. I think, at this age, this is not something which is good to come from a people, because we accept all religions. Yesterday, Mr. Chidambaram was saying something, Mr. Chidambaram was saying, he was quoting Madhavacharya, 16th century saint, Indian saint. When he said, Sarva Dharma Samahava, so same thing, it is quoting Madhava or other saints. But all the
believers. Hinduism believe that all are there. That is why we say, ekam sat vipra bahuda vadanti. People may call it by different names, but truth is only one. We believe in it. Unlike others, I'm not trying to criticize other religions at this time. They believe that mine is there. There is no Mr. Christ or Mr. Muhammad or no Mr. Zoroaster or no Mr. Confucius. We had a Hindu thought process as such. So this, I don't know, we are losing track. We must get on to that. We must build a nation, Indian nation as such. We are first Indians, last Indians. We are Indians. There is no question of first or last. Saying, like Sanathan is saying, there is no beginning and there is no end. If there is no beginning, where is the question of it being there? So let us not think. It is there. It is truth. It is all pervading. So I tell you, sir, the 75 years journey has been really rewarding, has been very good. I also congratulate. We had beginning, I told you, Tajik, the G20 was a welcome thing. But as I suggested earlier, let us learn to live with what we always boast of. We have today morning gave that big statement. I think you give scope for expression from all sides. Then what I call freedom of expression, that should be respected. The people's urges should be respected. You should not use your own agency because you are powerful. If that were to be the case, earlier regimes would have done that. Nobody has done it. They have respected nation. We have allowed the nation to grow. As Gandhiji said, independence is not for Congress, independence for the nation. Let us all think this nation, development is for the entire nation, not for one party or one thing. Thank you very much. Thank you. Now, Mr. G.K. Vasan, 3-4 minutes. Sir, thank you, sir, for giving me an opportunity. We all understand, sir, historic Parliament building. Today is the last day of our speech in this building. Maybe tomorrow we are all moving to the new Parliament, sir. This is the time to salute and respect our leaders who fought for our independence and got independence for us. This is the 75th year of our independence, sir. We remember the father of nation, Mahatma Gandhi, and all our leaders from various parts of India who were with Gandhiji and who fought for this country's freedom and who taught us ahimsa in this country, sir. Sir, we also have to be very proud that we are the largest democracy in this country, sir. We have genuinely, sir, preserved the sovereignty, integrity, security, solidarity of this country with pride, sir. We have made remarkable progress in the 75 years in the field of education, agriculture, healthcare, industrial growth, economic equality, and even in scientific space research, sir. Above all, as Indians, we are all proud today that our nation is looked upon by foreign countries for our helping hand and support even in international problems today, sir. This is the Parliament where legends have spoken, sir, in various subjects for the interest of this great nation, sir. We should be very thankful to our regional leaders, sir, who have been in this Parliament, spoken for the interest of the country. From Tamil Nadu, sir, I would like to proudly quote Rajaji and Kamarajji, sir, who have been the pioneers, and even today, sir, they are leaders who are the icons for youth in this country, sir, especially Tamil Nadu, sir. The national approach and outlook of leaders from the south, sir, has been great in the development of this country, sir. I must also place on record, sir, that India has achieved great heights during this 9 years under the Prime Minister of Modi ji, sir. To conclude, sir, I would say that the schemes, plans and programs launched by the government has embraced every citizen and have enhanced and improved the living conditions
of every Indian, sir. With this, sir, I conclude my speech. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me opportunity. Thank you. Ramnath Thakur ji. धन्यवाद श्रीमान The chair, when our chances will come? No, it's just a question. I was told that he will speak after half an hour. No. Who said? I did not say. I also said like that as speaker. No. No, it is good that we should make new traditions, but then we have to follow the traditions also, how the house runs. Please let him speak. So, welcome. Ramnath Thakur ji. But I have a right to ask a question. Kalita ji. श्रीमान Kalita ji. श्रीमान No, I appreciate your support. श्रीमान but then in the process, our turns are not coming. This is no discrimination. श्रीमान Yeah. He will also get you a chance. श्रीमान Yeah, please. मैं आपको He will also get you a धन्यवाद chance. देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सदन 75 वर्ष के He will get you a chance. No worry. 75 वर्ष में जो इस सदन का गरिमा रही है, जितने जितने महान पुरुष इस सदन के सदस्य रहे हैं, पीलू मोदी, राधा कृष्णन, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, चंद्रशेखर, राजनारायण, उन महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता की आवाज को जो उठाने का काम किया है, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादियों का जो ध्येय था, समाजवादियों की जो मांग थी, उस मांग को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। काका कालेलकर का जो रिपोर्ट था, जो नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, 1978 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और बिहार में पहला राज्य था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। 1990 में मंडल आयोग के इसी सदन में जो दबाव पड़ा था, इसी सदन की बात है, जो दबाव पड़ा था, उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मॉडल जो था वो जातीय गणना का पूरे देश में होना चाहिए था। बिहार ने इसको लागू करने का काम किया। महिला को गैर बराबरी 2005 से जो नगर निकाय में, पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को बिहार ने लागू करने का काम किया। श्रीमान, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नए भवन में जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार महिला को 33% आरक्षण दे करके इसमें लागू करे। मैं तो समझ रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार के द्वारा, उस सरकार में ये मणिपुर पर चर्चा होगी, मणिपुर के समस्याओं को सरकार दूर भगाने का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अभी तक मणिपुर के बारे में कोई काम नहीं हो सका। मैं 2-3 बातें कह करके अपने सुझाव को रख करके आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 75 वर्ष में 9 वर्षों में जो सरकार काम किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जेलों में जो बंद कैदी हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं, पैसे नहीं है उनके पास,
कि अपने को वो बेल करा सकें और केस लड़ सकें। तो हम आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आपने जो ये सत्र बुलाने का काम किया है, तो जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ने का काम करें, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह विशेष सत्र बुला करके या विशेष दिन रख करके महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसी तरह आपको चाहिए था, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए, आपकी सरकार की उपलब्धि बढ़ती। इसीलिए हम आपके माध्यम से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, हम देख रहे हैं, देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, सरकार ध्यान दे और उस पर अमल करने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, 6 minutes. Thank you, sir. Sir, when we are having a discussion with regard to the Amritagal, I would say that I have a three-dimensional view of the Indian Parliament. I used to watch the Parliament from outside, from above, and now I am being part of this Parliament, sitting below, sir. Sir, when we speak about Parliament, the basic aspect which we need to keep in mind, that is parliamentary democracy, sir. That is very important. Sir, what is the tenet of parliamentary democracy? The fundamental, cardinal principle of parliamentary democracy, as Kharge Sahab said, accountability of executive to the legislature. Niranjan Sahab, aap senior advocate hain. Sahi hai na? Have you ever seen an accountability of the executive to the legislature? Have you ever seen? Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House was very vocal, but he missed many crucial names, sir, including Jawaharlal Nehru. Intention. And I know that when Dharmendra Sahib is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Sahib. Sir, I am telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you are speaking. Dharmendra Sahib. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it, sir. So it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice, sir, we don't want to speak about the Oxfam report because that's not a good company for good organization for the present dispensation. It's blacklisted. You see the inequality that is spiraling up, sir. Sir, the liberty that has been ushered in, where has it reached, sir? Now it is more manifested in the form of sedition and UAP. That is a liberty which has reached. Sir, another cardinal principle is equality of status and opportunities. This government is honest to say that they don't believe it, sir. Ambedkar, who they try to appropriate now,
was absolutely clear when he said that democracy is not the law of majority, but the protection of minority. Raji Chandrasekhar Saab, protection of minorities. It's not said by John Brittas, by Ambedkar Saab. Sir, what is the representation of 20 crore Muslims in executive, in legislature, judiciary, even in media? P.T. Ushaji, you know that, the representation of Muslims, Christians, minorities in Kerala. What is the situation in Delhi, in parliament, in executive, sir? Sir, we all talk about, this government's pet topic is to, discuss about Mughals. I see they talk about Mughals more than the Indians now, actually. Sir, in Akbar's court, or even in Aurangzeb's court, more than 50% of the ministers were Hindus. Dheeraj Saab, Birbal, aapko jante hain na kaun Birbal tha? He was a Hindu, sir. Can you spot somebody in this executive now? What is the status of the representation of minorities, sir? Sir, Nehru's cabinet, that was the first ministry. It was a model government. It had given representation to every segment. Dharmendra Prasad Saab, 2 Muslim cabinet ministers. You know Maulana Azad, Rafi Ahmad, John Mathai, that was a Parsi, Sikh, everyone. Of course, Shama Prasad Mukherjee. And even not having ideological, I would say, togetherness. I know Derek Saab, representation from Bengali, of course. Sir, it was Maulana Azad who stood on the steps of the Juma Masjid and said, this country is ours. We have built up this country. There is no need of going away from this country. You want to obliterate the last set of memory about Maulana Azad, you scrap the scholarship. Dharmendra Prasadji, you scrap the scholarship. Not you, I think Smriti Irani ji, I think. Even that, not he didn't scrap. Sir, come into fraternity. Sir, what is the new usage of fraternity? Madam, you know what is the new usage of fraternity? Go to Pakistan. Go to Pakistan. If somebody speaks, they will say, you go to Pakistan. Sir, we are part of this country. We are as patriotic as you are, sir. Sir, maybe more. So now G20, there have been a lot of discussions, fanfare about G20. We appreciate if India get a standing amongst the other nations. But if you look at the indices, Rajiv Saab, what is indice? Per capita GDP, Human Development Index, Hunger Index, hum last hai. Bilkul last hai. And is that the reason why you brought in African Union to the G20? So that we did not be last? Anyway, I appreciate that. Sir, coming to the preamble again, sir. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, sir. Sir, what is sovereignty now? Hugging Western leaders from Trump to Biden doesn't mean sovereignty. You finished up now because Nehru's name is there. You don't want non-alignment movement to be there. Just because Jawaharlal Nehru was instrumental in setting up non-alignment movement. Now, sir, the second word, socialism. What is socialism, sir? Socialism has become Adanism. That is a new word, Adanism. P.T. Usha, madam. Socialism bedal gaya, Adanism ho gaya. Chupchap baith rahe aap. You should be standing up and talking about that. Now, sir, secularism. Another thing, sir. See, secularism. You know, a gentleman sitting in Prime Minister's office had the audacity to say, Dharmendra Prasad Saab, Dharmendra ji, suniye sir, Vivek Debroy, this constitution has become useless. Only 17 years it can stand. And he said he doesn't understand the meaning of socialism and secularism. A gentleman heading the Economic Advisory Council of the Prime Minister had the audacity to come and say that he doesn't understand the meaning of secularism and socialism. I would have expected a cabinet minister, the stature of Dharmendra Pradhanji, to say, shut your mouth. Did you say, sir? You should have said it. Sir, now, another word, sir, democracy. See, many of the members think, sir,
democracy has turned to be namocracy or modiocracy. Sir, democracy or modiocracy because we don't see the Prime Minister. My daughter was asking, did you get an opportunity to sit with the Prime Minister, sir? I said, no. Very rarely only I get, sir. So, what does it mean, sir? Democracy means accountability of the executive to the parliament and parliament being accountable to the people. That is democracy, sir. Sir, republic. I know where is Rajesh Sinha ji. For Rajesh Sinha and others, you know what is the meaning of republic? Vice Chairman, sir, you know what is the meaning of republic? Arno Goswami. That is the meaning of republic for many of the treasury benches people. Sir, that is the state of affairs of this country. Dharmendra ji, please don't look me like this. Please. You will, sir. Please conclude. Sir, please. this time you will have to give me, sir. John, please conclude. I will yield, sir. I will yield. अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जॉन बिटास अच्छे बोलते हैं और उनकी मुंह से हम लोग नेहरू जी की प्रशंसा सुन रहे थे, अच्छी है। मेरे को लगता है जॉन बिटास थोड़ा अच्छा रहता राज्यसभा में जब नमूद्रीपद जी की सरकार को केरला में पहली बार तोड़ दिया गया था, राज्यसभा ने क्या डिबेट किया होगा, उनकी पार्टी ने क्या व्यू लिया था। अभी बहुत तो नसीहत डेमोक्रेसी के बारे में दे रहे थे, अभी उनके बारे में जिस विचार पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जीते केरला में, उन्हीं की सरकार को जिनकी आज कसीदा पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, नमूद्रीपद की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। तो उस समय में राज्यसभा में सीपीएम के मित्रों ने क्या बोला होगा, थोड़ा अगर लाइट डालते तो शायद जॉन बिटास से हम ये अपेक्षा कर रहे थे। ये मोकरी, जॉन बिटास, यू आर वेरी एनलाइटेंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डोंट लाफ एट योर कॉलीग्स। You may get box news in the Indian Express, but we expect some good light, good view of yours. When Namboodiripad was dismissed from the Kerala, what was the view of CPM in the Rajya Sabha? Please enlighten us. Thank you, sir. Sir, thank you, Dharmendra ji, for reminding me about the dismissal of EMS Namboodiripad. For such misdeeds, they have been punished. They are sitting here. Precisely that is the reason. Otherwise, do you think that they would have been put here? But you are repeating the same mistake. You are calling us, depicting us as Somalia. Say extreme poverty, let us look at. Extreme poverty in UP and Bihar is 30-40%. In southern states, it is 10%. In Kerala, it is almost zero. Yes, almost zero. Extreme poverty. Sir, it is because, sir, so much of disruption, sir. I want your protection, sir. I want your protection. You have my protection. Yes, sir. Sir, this happened because, Mr. Muralidharan seems to be a Keralite, but his only job is to act against Kerala. Yeah. His only job is to act against Kerala. Sir, when we talk about 75 years of Indian democracy, we cannot forget the name of Mahatma Gandhi. I was surprised that nobody from the treasury bench even referred to Mahatma Gandhi. Just because he held Gita, Quran and Bible close to his chest, he was assassinated. He was assassinated. Only because of that. Everybody knows about it. Sir, you are replacing Mahatma Gandhi with Savarkar. That's why, sir, the new parliament has been inaugurated on the birth anniversary of Savarkar instead of Mahatma Gandhi. You should have. If you had some respect, you would have done, sir. Sir, further, sir. Time allotted is over. Sir, I wanted to say your time is over, sir, so but much I came to know your time can never be over. 2 minutes. I will finish, sir. Sir, 2 minutes. Sir, the biggest business, sir, please. The main business of this government is to appropriate people. Sardar Patel. They think that Sardar Patel is theirs. Sir, wasn't Sardar Patel who banned RSS after the assassination of Mahatma Gandhi? What did he say, sir? The banning was to root out the force of hate and violence.
that are at work in our country and imperil the freedom of nation and darken her fair name. Sir, another person who is being appropriated is Vivekananda. Didn't he say so? Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. That is what Vivekananda said, sir. Sir, the unfortunate part, sir. Sir, you are a legal luminary. We are very happy that you preside over this house, sir. Yes. Your rich knowledge. Sir, I have seen you as a minister. In 1989, when you came to Lok Sabha, sir, I was in the gallery, sir. With huge admiration, I have been observing you and watching you, sir. Sir, but the unfortunate part is that, sir, the demolition of every institution in this house, in every institution, from Parliament to Please Election conclude Commission. now. Please conclude. Sir, I am talking about you also, sir. Sir, that is why you have to conclude. Sir, I am going to talk about you also, sir. Conclude. Every institution in this country is being demolished. From Parliament to Election Commission. Sir, what is Election Commission now? Now they are bringing the status of the Election Commissioners from the Supreme Court judge status to Cabinet Secretary. And day after tomorrow, Dharmendra Pradhanji will bring a bill to make them a chaprasi. That is going to happen, sir. Sir, every institution is being disbanded, sir. Sir, Article 1. Sir, what? Last one. Siri Vaiko. Sir, I'm just 1 minute. 1 minute. Sir, 1 minute. It says that India, that is Bharat, shall be union of states, sir. Sir, federalism, sir. Kerala contributes 1 rupee and get back 25 paise. That is the status of federalism in this country, sir. Yes, it has turned to be like that. The Honorable... Sir, I would say that. You told me, Once again. Chairman, sir, you wanted us to have some change. The Honorable Member has made a statement of fact. Yes, sir. He will authenticate. I will authenticate. Sir, Kerala contributes 1 rupee to the national kitty, gets back 25 paise. I repeat it. I will place the document on the table of the House. During course of the day. Sir, and sir, last thing, sir. Sir, it's good that we are taking stock of this country. Democracy, institutions, parliament in this Amrit Kal. Sir, structure doesn't matter, sir. New parliament or old parliament. The process matters. The content matters. Can we enrich the parliamentary proceedings? Can we enrich the democratic process in this country? You can build mansions, structures. But, sir, that will not strengthen the democracy in this country. Unless you enrich, sir. Please so now. I would urge conclude. I would urge upon the treasury benches through you, sir. Let us all resolve to enrich the democracy of this great nation. Thank you, sir. Okay. On a point of information from you, have you been to Statue of Unity? Have you been to Statue of Unity? Sir, I haven't gone, sir. I will go. I strongly suggest you go there once. I will go, sir. I will go, sir. If you give an invitation, I will go, sir. Great effort to appropriate someone. Sir, if you give an invitation, I will go, sir. I have been there. Sir, and sir, I will be happy to go with you, sir. No, I'll go with you. Sir, Mr. Vaiko. Sir, let me have a towering personality beside me when I go. Let us hear Mr. Vaiko. Mr. Chairman, I am extremely thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion on parliamentary journey of 75 years. Starting from Constituent Assembly, its achievements, experience, memories and learning. It was also a long journey for me, having entered Parliament in 1978 as a member of Rajyasabha. Now it is my 4th term in the Rajyasabha. Apart from being a member of the upper house, I had the honor to be a member of the Lok Sabha for 2 terms, in the 12th Lok Sabha and the 13th Lok Sabha. There were many swings and waves the nation has witnessed in the last 75 years. But what is shocking me, why the name is changed as Bharat, and when the G20 meeting took place,
Before the Prime Minister, the name was Bharat, not India. So we are not representing India. Then you call it United States of India. That should be called. All the states should be given equal opportunity. Bharat, where it came from, Bharat? From Upanishads, from Sanadana and Hindu Rashtra. So they are trying to take this country towards Hindu Rashtra. But one thing, I would like to tell them, you never entered our area. Guptas never entered. Mauryas never entered. Nobody entered to Tamil Nadu. But we have come to Ganges. We have come to Himalayas. Sir, I am very sorry. The Prime Minister of India, he is putting Bharat instead of India. So hereafter, we have to call India. Why he is afraid of India? The formation of India has threatened them. The formation of India has threatened them. Therefore, they have put the name as Bharat. Sir, I don't want to take much time because you have given me a privilege to take this time. I demanded installation of Ambedkar portrait in Central Hall of Parliament, allowing army men belonging to Muslim community to offer Jummah prayers on Friday. Sir, secularism is under threat. The Muslims are under threat. The Sanadana forces are threatening them. They are afraid because you leave India, you Muslims India. This is not your country. This is the voice of the Hindu Rashtra people. In this way, the country will be balkanized. I today warn you on this particular day, it should be noted that it will become Soviet Union. What happened in Soviet Union, this will happen in India. India will be balkanized into so many states, and therefore I said United States of India. But at least you make a name United States of India. Otherwise, India will not be one. When you want to celebrate centenary celebration of independence, but 2047, there won't be any such India. Thank you, sir. Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar. Leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. शुक्रिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन के नहीं शुक्रिया मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं यहां से बोल रहा हूं, इधर मैं यहां से बोल रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया, तो मुझे स्मरण है ये किताब, मैं एक ही किताब लेके आया हूं, ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की। तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े
तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़ें तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हां, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आई थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेशे नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया। तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उपसभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई। मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है। 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का। बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है। इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है, उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं 2 व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो B.R. अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई,
लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए। जिस हॉल में वो लोग बैठते थे वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया। तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की। उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए। हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब दो और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है। मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां का भूगोल क्या है? इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे? ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मेलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो, हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं? और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का। मरते थे जिन पे हम, वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। वो नुस्खा हाय नादिर व नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे, हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनाहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं
तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, संविधान सभा के उन तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगर में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. वैश्य। Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, with all the members sitting for the last time in this building. Tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we are going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. So I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the Duda. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi, and in class 8, in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir. Madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside, and in 1996, physically for the first, I entered this house as a Member of Parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a Cabinet Minister of the country in the year 1996, and it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajyasabha. Although I was a member of Lok Sabha, but as a minister, I was attended this house also. It is painful, no doubt. From tomorrow, we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After then, many things was discussed inside this Parliament building. When China came to near to Tezpur, China came up to Bombila.
people of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 61 session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Barua, who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared, evoked in our country. And at that time, parliament was not functioning, parliament was dissolved. Our honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Vaishali. It was started in Vaishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Vaishali of our country is the first place of democracy started, where in Vaishali town, it was 600 years ago, 707,000 people, locally elected people, selected people, sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country, for develop our country, and financially to improve our country. Many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries, functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. 1 minute. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Bajpayee.
budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratory personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I have learned many things from these people, sir. Ma'am, remembering my first day in the life when I was a student of class 8, I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician. But I am a son of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I am not speaking about my political party, then it will be not fair. I am getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I am grateful for my country. In my life, I am working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajyasabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building. And from tomorrow, in new building, we start our new parliamentary life, our new democratic life. With this word, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs, and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy.
There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament committee and internal part of our democratic system has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent. Recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new Parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our Parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir. I get up to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building, and How can you be so sure? well, I said probably, and I'm sure we are all filled with a No, sense tomorrow of. we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course, we are Me all. and Praful Patel got together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajyasabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here. And definitely, 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time.
A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples. But no country, as again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी। एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था। तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था। तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है। और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं, तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है, ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में
एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honorable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, for giving me the opportunity. क्या पता कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajyasabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan-sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajyasabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair, and he was followed by, of course, R. Venkatramanji, Sangadel Sarmaji, and today you are in the seat, sir, and I thank you for that, that the Indian democracy and Indian parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan-sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and
they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women of all religion, all communities were given equal power, and that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Rao ji. And today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today, the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam, another remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of Parliament, was the GST. The GST was Goods and Services Tax was implemented and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST, and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019, this country had 2 constitutions, 2 flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable things, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also help other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and the entire country was vaccinated. And today,
we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, what during the 75 years of our journey, what achievements this country has made. Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters, number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million in 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajyasabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line. Up to this 75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort. And every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, now I'm going to conclude because there are some more speakers. They are also, and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our Parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950
to the recent inauguration of a new parliament building in 2023. These events signify our nation's growth, resilience, and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam. Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी। Honorable Chairman, sir, and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India, as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temple of our world's largest democracy. Indian Parliament is an inspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism, social justice, and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफर करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियोटिज्म हमारे सामने है। I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aав ki Aud Nidhan Bane, At hi Ran Mein, Tab Jooj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same parliament building, while presenting the constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface.
As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion people who want us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत, हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we, as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in 91, and he had said, कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नज़रों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house, we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद आप सभी को मेरी पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के दायरे में से आगे हम सभी एक हैं. हम केवल भारतीय हैं. आप सभी भारत वर्ष का इतिहास जानते हैं. भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ. इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ. स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे. स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं. 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ. तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला. इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ. इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया। आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए। विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है। एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है। मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ। इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दूँ। आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में आप देखें IIT, IIM, MBBS, UPSC सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है। भारतवर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है। भारत के 8.6% इनका संख्या है। आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है। देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है। सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है। उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है। यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं। यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है, 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है। और कृषि क्षेत्र की बात कहूँ तो यहाँ 60% किसान हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमें 2 वक्त के खाने के व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत योजना बनाए हैं। प्रति वर्ष स्वतंत्र बजट किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सभी रोग का इलाज तुरंत हो पा रहा है। गमनागमन, शिल्प, टेक्नोलॉजी, विज्ञान क्षेत्रों में हम बहुत आगे हैं। आज हमारा देश बहुत आगे है। इन नए संसद गृह से भारतवर्ष का नया इतिहास लिखा जाएगा। सबको बधाई देकर मेरा वक्तव्य रखती हूँ। नमस्कार। Dr. Amar Patnaik. Sometimes it is very good to catch someone off guard. Then the productivity and contribution is more genuine and authentic. Okay. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. So it's actually indeed a privilege for me to be present here, speaking about 75 years of Parliament, of the largest and one of the most diverse democracies of the world. It's no mean feat, sir, that parliamentary democracy has flourished in this country because of this Parliament. What is currently happening or is about to happen is that we would be moving in a symbolic fashion from old to the new, from new to the aspirational, and from a democracy which was marked by bills and acts which laid the foundation, or which will be the foundation for several such new bills and acts in the future in the new building. Sir, I would like to speak about a speech which Dr. Ambedkar made in the Law College of University of Delhi way back in 1948. He says, "There could be no doubt that one of the countries which could boast of a great ancient civilization was India. It had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads.
It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. It is not that India did not know parliaments or parliamentary procedure. A study of the Vinaya Pitaka and the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments, for the Sanghas were nothing but parliaments, but the Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. So I would concur with what other members were referring to say that democracy did not really originate in Greece, but it originated many years before in this particular land. So if we are talking about parliament, I would like to think that since we knew about the parliamentary functioning for a long time, and since we are talking about the Constituent Assembly gave us the Constitution. But it is the Parliament that helps to make the Constitution a living document by the process of amendments. And that is how each one has enabled and strengthened the other. And these amendments have actually made the Parliament, made the functioning of the Parliament closer to the socio-economic and political reality of each of the times, the entire history of this particular 75 years. So the role of Parliament, in a sense, anywhere in the world, would be fourfold. So one, to make laws, which will be evolving with the times. Second, to pass the budget. Third, to raise national, state, and local issues. And number four, to hold the executive to account by various procedures of question and answer and committees and PAC and COCO and other such matters. Now, if we talk about the first and the foremost duty of Parliament, that is to make laws, I know that the Parliament has made several laws. There are more than 100 amendments which have been passed, but I would like to concentrate on a few. And those are, the first one, on the center-state relations. So the Parliament, right from the time the Constituent Assembly debates have taken place, has been cognizant of the fact that the states have a very important role to play in democracy. In fact, Renuka Ray, she was a member of the Constituent Assembly, while agreeing with Pandit Kunjru, she says, it is necessary that the center should be in a position to see that provinces do not fall behind in regard to the minimum standards of development. But agreeing with Pandit Kunjru, it is also not possible for a province to administer its responsibilities in an adequate manner if its financial position is unstable or uncertain. Therefore, the Parliament's job is threefold. One, legislative relations, administrative relations, and financial relations. While on the first two front, I think there has not been much divergence except occasional allegations of center legislating on the state list, the problem has been the financial relations, the devolution of funds. And I think this is where our Chief Minister, my leader, Honorable Naveen Patnaik, has always been saying that the cess and surcharge which comes to the central kitty should be made a part of the divisible pool. I think this is what we have to look forward in the next 25 years to be happening, to make the states actually financially independent and financially sustainable to take the entire goal of the nation forward. The second aspect that I would like to talk about is on the issue of women, sir. So on the issue of women, the Parliament has passed several landmark legislations, and many of them have already been spoken about here. One is the Hindu Marriage Act. It removed polygamy, marriage of a maiden and that of a widow, the registration of Hindu marriage, the divorce, the Hindu Succession Act, which is very significant because it gave property rights to women, the Hindu Succession Amendment Act, Child Marriage Act, and several such acts relating to women. But I think it stopped short of one particular last legislation, and that is reservation for women in the parliaments and the assemblies. And that, you know, sir, our leader, Honorable Naveen Patnaik, has been taking it forward for a long period of time, sent emissaries to all political parties. We have spoken here all the time to bring this legislation so that women, the gender parity and the gender equity, the theme reaches its final conclusion by this parliament, whether here or in the new building. And the last point, sir, that I would like to talk about is environmental constitutionalism. Sir, this is the
Parliament, which has passed most of the environmental laws, starting with Air Pollution Act, Prevention of Air Pollution, Prevention of Water Pollution, Environmental Protection Act, several such laws have been passed, and that is how the Parliament has responded to the existential crisis that is facing this world at large, which is happening because of climate change. I think the Parliament has responded very well, but there are two gaps which probably could be brought in, and that is how the Parliament of India would have responded to the world, and that is to bring in a legislation to ensure that net zero is reached in a fixed period of time, and incentives are given for proper environmental response. So last point, our Parliament, while we transition from here to that building, would also mark a transition in the way the Parliament of India is responding to technology, sir. So we are moving from a physical, more of a physical Parliament to a Parliament which is both physical and digital, Sansad, sir. It will be it is not yet hybrid, but that will be the way forward, sir. So I think with this, I would end my speech. Thank you so much for giving me these opportunities. Well, you are very well audited. That's your background. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir. Thank you, Chairman, sir. Oh, here and there. Sir, called as a special session, sir. We are still not aware of the business to be transacted in the remaining 4 days. A shock or surprise may be awaited. We'll have a business advisory committee. Sir? And we'll have a business advisory committee sir, tomorrow, and you'll be enlightened. As of now, and for tomorrow, you know everything. Okay, sir. Go ahead. As of now, I am telling. So a shock or surprise or nothing is awaiting, and we are also awaiting. Sir, we have completed 75 glorious years of independence and 72 successful years of journey of the Parliament. Sir, this milestone makes it important to recall the hopes, the ideals we have cherished, we have accomplished in this Parliament, fulfilling those visions of the people who fought for freedom and those who drafted the Constitution. Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to those who laid down their lives for our freedom, the independence which we are enjoying. Starting from Pulitevan, Veerabandya Kattapomman, Marudu Brothers, Velu Nachiyar, Kuyili, and Tilakar, Gokhale, Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, VOC, and unsung heroes and unsung heroines, which is very, very important, sir. Sir, I think this is the right time to tell that. In a freedom struggle in Tamil Nadu, many women participated with involvement. One lady participated with a 1-year child in her hand. And when the police attempted to disperse the crowd, they opened fire. And when the crowd dispersed, she fell in a place. The flag which she was holding was in another place. The child fell in another place. And the bullet that was fired hit the infant, and the child died, sir. A child who knows nothing sacrificed his life, and that mother of the child named Kaliammal, she didn't hesitate. She again took the flag and marched. So many unsung heroines or unsung heroes who have to be recollected at this very proud moment. So democracy is a popular sovereignty. The concept of this popular sovereignty is attaining its completion by way of the functioning of the Parliament. Sir, in post the first Indian general election in 1952, the Manchester Guardian commented, parliamentary institutions have not had a very good time in Asia. All that is happening in Asia throws a spotlight on the Parliament in Delhi as the one institution of the kind which is working in an exemplary way. So there are two salient features which has brought India to as a focus as a largest democracy. One is our constitution and another is the Parliament. Sir, Thomas Jefferson, the architect of America, once said that no constitution
will survive the test of time more than 20 years. But ours is very vibrant even after 72 years because of the amending provisions. We have changed to time. And ours is not only the longest, and it has been discussed with a very long period of nearly 3 years. Sir, democracy, when it came into existence, some people say Greece, some people say somewhere else, but we are the predecessors, we are the foreigners in everything. For example, in Tamil Nadu, sir, early Chola period, that was in 2nd, 3rd century, some excavations near Chennai, Uttaramerur, brought out the fact that there was a Kudavole system, that is a Yersan part, in which people will write on the palm leaves their choice of candidate and would deposit in that, and a child would pick up and that person will be the Sarpanch of that area. So this democracy has been in India for more than 2000 years, that too from the southern end, sir. Sir, coming to the parliament. Sir, sentiments are not attached only to humans, of course to buildings too. I can recollect many things. And even if you move to a rich looking new parliament, sir, I think you or I, many of us would visit this parliament and especially the central hall. How can we forget that, sir? How many things have happened which is in history? Sir, the foundation stone for this parliament was laid in February 1921 by Duke of Connaught. And it was inaugurated by Viceroy Irwin in 1927, 6 years it took place. Sir, we should be very happy to note that the buildings were designed by Sir Herbert Bhaskar along with Edwin Lewin, architects of the new imperial capital. That is not the issue, sir. What I would like to highlight here is the sandstone columns in our parliament is a state of the art. And it is said that 2,500 stone cutters have been employed to design the top of the parliament, and almost it took so many years. 2,500 stone cutters and masons were employed to shape the marble there. And the central hall, sir, originally it was designated to be a library. Sir, you know very well everything. And later the Constituent Assembly sat there for 4 years, from 46 to 50. And after that, sir, it's a surprise that Supreme Court had its sittings here in the Central Hall, till it migrated to 1958 in the present building. And this Central Hall has witnessed a lot. Sir, I can hear two sounds. In June 1929, there echoed the blast of bomb which was thrown by the revolutionary Bhagat Singh and H.K. Butt to attain freedom. And thereafter in 2001, there was a terrorist attack in the parliament which was to foil our freedom and a challenge to democracy. But this parliament withstood that, sir, thanks to the design and construction of this as well as the security guards who were very much awake and acted to the situation. Sir, this circular shape of this parliament is a reminiscence of the Rome Colosseum, they say. So, see, I have been here for more than 2 decades, sir. I have been once in Lok Sabha and the 4th term here, sir. No other place in the world I love than this parliament premises. For many reasons. For many reasons. Sir, we have been contributing our service through this parliament. We voice out the people's aspirations. We fulfill their expectations. We redress their grievances by urging the government to understand and act. So this is it. This is the setup of a parliament. We make the government accountable. And this way we have worked a lot and have contributed, and we are setting a trend to the whole world, sir. And this Central Hall has seen so many. Again, sir, you know very well, it starts from Richard Nixon, then Eisenhower, then Khrushchev, sir? Many have come. Khrushchev, sir, Margaret Thatcher, Barack Obama, along with our presidents have addressed the joint sessions of parliament after the general election and before the commencement of every year. And people like you, sir, as vice presidents, what all they have done. Sir, all these are reminiscences. So what's your point, sir?
Coming, sir, I am pricing about this Sentiment. building. We are attaching our sentiment. When we are celebrating You are 75 right, sir. years of independence, sir, I have to exalt the building, sir, the parliament. It's not just a building, sir. How many laws? See, in the first 2 terms of this parliament, 1952 and 57, it's only 700 laws have been enacted in this parliament. 700 laws. And moreover, in those first 15 years, till 67, the legacy of the freedom struggle continued by Congress and as well as opposition parties were there. Who were all there? Communists, the socialists, as well as the culturally conservative Sir, Jansan. you are getting sentimental beyond sentiment. Sir, What exactly are you liberal focusing Swatantara on? Party. And sir, after the DMK entered into the parliament, the doors were open for the regional parties. In a federal setup, the regional parties should have a very important place and it cannot be dispensed of, was established only after DMK came here. Our founder leader Anna, how his voice echoed in this August upper house, sir, it is still in the annals of history. Sir, I also visualize who all have been here. Pandit Nehru, Dr. Ambedkar, Lal Bahadur Shastri, Kripalani, Madhu Dandavade, Vajpayee ji, Advani ji, Ramanohar Logia, and our beloved Anna, until Murasali Maran, sir, your colleague when you were in the Ministry of VP Singh, sir, his performance in Doha conference is still a history. Sir, coming to all these points, sir, I think I have some time, sir. No, sir. No, what I am doing is that the main opposition party, their entire time had been taken by the Honorable LOP. But I would still accommodate some of them, given their huge experience. That being the situation, I am rationally, uniformly curtailing time, more of the ruling party, but of others also. So please cooperate with me. Sir, I could hear, though I was not there, the Tryst with Destiny speech of Pandit Nehru. The Tryst with Destiny, the speech delivered by Pandit Nehru at the stroke of the midnight hour, sir. No, what I said was that we had a tryst with destiny. Sir? We had tryst with destiny. In 15th August 1947. Yes, sir. Long years Again, the ago, we had a parliament met tryst here with destiny. at midnight, rolling out a GST regime. When I the was whole saying, world sleeps, India after a gap of 70 will years. awake to life and freedom, sir. He started his speech. Sir, I had the privilege of being here during the golden jubilee of the independence, sir. And in the central hall, we heard the speeches of Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. And that's a very green memory. So also these speeches, sir. And after the speech of Pandit Nehru, very important here is we have to recollect this mentioning of Dr. Ambedkar, the architect of our constitution, because this is the right time when we are speaking about constitution, we have to preserve also. So I have to quote only 2 things, one of Ambedkar's and another of Anna. However, a constitution may be, quote Dr. Ambedkar, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. Okay, sir. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. If those who are called to work it happen to be a good lot. The Constitution can provide only the organs of state such as legislature, executive and judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. That is the Climax. of the matter. Climax is, sir, if I find the Constitution misused, I shall be the first to burn it. I'll be the first to burn it. Sir, it was said by none other than Dr. Ambedkar, sir. So also, during his last speech in the Constituent Assembly, he congratulated everyone, those who supported and those who dissented. The proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline in all its rigidity would have converted this assembly into a gathering of yes men. So he says that, he goes on to thank all those who dissented also. It has a relevance, sir. Huh? It has a relevance. All I can say, Everything has a one relevance, second. sir. All I can say,
Dr. Ambedkar had been very prophetic. Very? Very, very Yes, sir. prophetic. Yes, sir. Yes. I wish That's why the I quote, people sir. sitting in this house would be in a position to take a call while being here. That's something which has eluded us. Two things I quoted very much, sir, here. However, a constitution may be good, if those who are implementing it are not good, it won't prove to be bad, number one. And second, he has said if it is misused, he will be number one to blame. Thank you. Sir, and our late leader, Anna, very important, sir, he entered into this parliament and said, I am from the Dravidian stock. I have something distinct and different to offer to the nation at large. He started, and very important, he spoke during the official languages amendment act, sir. Sorry. Please conclude. Sir. Yeah. If it is uniformity, quote, Anna spoke, if it is uniformity that you are going to aim at, you are not going to achieve it, come what may. This country consists of different ethnic elements, different cultural elements, and different linguistics groups. It is only unity within this diversity that we should arrive at, and not by destroying the fine niceties of this diversity, mistaking uniformity for unity. May I ask members of this House and the Prime Minister whether language alone is the cementing force needed for the unity of this country. There are regional imbalances, there are regional leanings, there are linguistic leanings. All these things have got to be bridged if you want to have a sort of unity without uniformity for this country. Unquote. Thank you. Unquote, sir. Sir, this parliament has experienced very well. It has flourished all the diversities, sir. Our social, regional, linguistic, ethnic, religion, everything. But that has to be maintained. That is our foremost wish, sir. Sir, many things have to be observed. I don't know, sir, why you are hurrying up when you have been liberal with everyone, sir. Sir, even your time is over. Yeah, sir. Sir. Yes. Now give me 2 more minutes. Let me conclude, sir. Let me conclude, sir. Sir, everyone is optimistic that when we move to the new parliament, it's a new building, but our convention will be the same. Our functioning will be the same. We will be upholding democracy as the constitution, which is our guiding light and guardian. And it is the responsibility and duty of everyone. Sir, the parliament understands and establishes whoever is in the opposition will be the ruling party next time. So this is, of course, democracy. The parliament understands, it has been repeated. Sir, I would like to say only one thing, sir. In the recent days, the space for the opposition is shrinking. There has been a decline in the ability of the parliament to hold the government accountable with fewer days of working. Scrutiny of legislative proposals is weakening. Expansive executive control over the legislative process persists. They got frequent government resorts to ordinances than legislation. Sir, this is only our concern, sir. At least we have to be free. Because, sir, you, sir, you know very well. Experiences of journey. You are right. Yes, sir. But when I look within, yes, sir, I find lost opportunities. Enough opportunity was available. Why that was not availed? We have to be very rational, committed. It is good to speak these things. Yes, sir. Good to talk of sublimity. But I keep a diary. And mind you, I am in pain. Sir, I have been... I did everything in spite of perception, whatever be around, sir, I mean, to make available platform. Sir, To have, sir, it you was are not our there. protector. Let us hope, pray, and wish that we will avail every opportunity to make a contribution in this great theatre. Sir, we repose our confidence Without upon disturbance, you, without disruption. Sri S. Niranjan Reddy. Sir, only last sentence. Sir, the ideals of Anna, the Dravidian policy, and sir, we are second to none in upholding the sovereignty of this country, sir. When Chinese aggression came, we gave up our policy, the individual Dravida Nadu. And when the Bangladesh war came,
our then Chief Minister, Dr. Kalaignar, gave 6 crore rupees, the first ever in the state. Shri Now the S. under MK Niranjan Stalin, sir, Reddy, we are 5 pursuing minutes. that. Go ahead. And we will Thank you. Thank you, Chairperson. Sir, I think it is my fortune that I finally got to address the House with you being in the chair, maybe on the last day of the House being in session. In this House. Sir, parliamentary journey of 75 years is quite a historic occasion for someone like me to have an opportunity to speak. Sir, I regard myself as someone who is relatively inexperienced and young parliamentarian because I have only completed 1 year. Maybe I bring the advantage of fresh eyes to see the ongoings of the parliament, to maybe give some inputs of mine, sir. And sir, but I have been an old student of the Constitution. I was going to actually speak little more about it, sir, until I realized you have much more experience than me about understanding the Constitution. Sir, I think the single biggest achievement of our Constitution has been that it has managed to survive. It has managed to survive, sir, despite some challenges it faced during some emergencies. It has managed to survive despite it being tested during a long coalition period when the country came out democratically rich. Sir, it has continued to serve the country most positively. Sir, while we speak of the new Parliament House and where the functioning may shift, sir, I remind myself that we belong to the Rajyasabha, which is a continuous house, and we are serving under a constitution which is a continuous document. So both of these are going to be permanent features, sir, that would possibly guide the functioning of our house even in the new Parliament. Sir, my passion with this constitution subject started with my reading of the Constituent Assembly debates. Sir. Today's topic is Rajyasabha and the Constitution working for 75 years. Sir, every time I read the Constituent Assembly debates, they are an education in itself because the quality of debates, the kind of divergent views that were expressed in a very productive manner and the symbiotic manner in which the Constitution came to be forged, sir, resulted in the most prolix Constitution and the most living and breathing Constitution, sir. So in my view, when someone says that the Indian Constitution is possibly one of the most amended Constitution with more than 100 amendments, it is a salute to the Constitution that the Constitution permits such changes to be made having regard to the diversity and the advances of the society. Sir, we have remained up to date with our Constitution. It is possibly the most brilliant legal document that the world has seen, sir. Sir, in terms of the learnings and challenges, sir, I think we have completed 72 years of being a republic. We have completed more than 75 years from the time the Constituent Assembly originally sat to prepare the Constitution document. Sir, I think when we now move into the new house with possibly new infrastructure and digital infrastructure, so we may have to be mindful of a few challenges we may have having regard to the learnings of the past. Sir, one of the challenges that I would be looking at, and I'm quite sure, sir, the government would steer us through these challenges, would be the role of states. Sir, I would like to just maybe, sir, my inexperience and my green eyes, it allows me to see something where I find that Rajyasabha increasingly is becoming like an echo chamber of the Lok Sabha where we debate the same issues on the same footings and on the same concerns. Sir, we are a council of states. We represent the states. So I would, sir, prefer and I would suggest, but subject to correction by all the seniors here who are much more experienced than me, that when we possibly move into the new house, we look at our role as a council of states more seriously. We may have to look at representing the interests of states. So when I speak of representing the interests of states, I do not speak in terms of a divisive central versus state sphere, sir, because I also understand that the same party which is ruling the central government is in power in majority of the states. So when we speak of state subject, state interests being protected, it is not a divisive debate that I am trying to provoke, sir, but I am trying to say that it can be done in a constructive manner. So one other
challenge that may be facing us, yes, sir, I am taking only 1 more minute, sir. One other challenge that we may have to encounter, sir, with the enlarged space in the new Lok Sabha, there are a few concerns about the South Indian states and the more developed states feeling that will they be, in that sense, outnumbered, because Article 82 gives a protection up till 2026. Would that be balanced in some manner? Sir, I'm sure we'll have an opportunity to debate it, but I think it's a matter of concern which I just wanted to place for the House to consider in due course. Sir, then the last point I want to make, sir, is we are now moving towards a developed nation, sir. We have that 25-year goal. We would want to commend the government and support it fully. As Indians, everyone wants India to be a developed country. But development, sir, in many respects, apart from the material development that we are gaining, sir, I would think that the very fact that we are preserving the constitutional ethos in its fullest form is possibly the greatest tribute to India as a democracy. And sir, the most satisfying thing for me about G20 was India calling itself as a mother of democracy, because that clearly shows the path India wants to take going forward as a democratic country. Sir, I thank you for granting me an opportunity for speaking on such an important occasion. Sri Rajiv Shukla, very brief. सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण की हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये लोगों को जोड़ता है। ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी in Indian politics. There can be difference of opinion, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधु लिमय जी नए MP होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया, और उन्होंने सुना। और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला ये कहाँ रहता है। तो उनका जी वो साउथ मेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। तो मधु लिमय जी नए MP आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुंच के उनके कहले चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो, और तुमने हाँ चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन एक चीज़ मैं सलाह दूंगा एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ। तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो लिमय जी ने, मधु लिमय जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूँगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूँगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमय जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते तो उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज़ से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें संसद को उसमें देखने को सीखने को मिलती हैं। ये स्थान सर सेंट्रल हॉल जैसे चीज़ का प्रतीक है। कितनी भी शत्रुता हो, आमने सामने पड़ जाते हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, वहाँ से बात खुल जाती है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो ये संविधान भी जो यहाँ पे बना वो हर प्रधानमंत्री का योगदान है, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे जो है इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी का हो, गुजराल साहब का हो, अटल जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, और अब मोदी जी का। सब जो है आते हैं, सब काम करते हैं। तो ये सब जो है हमें आपस के यही संकल्प लेना चाहिए। आज की नए भवन में जा रहे हैं
तो हम ये मन बदलें, दिल बदलें। जैसे अटल जी ने कहा था कि जो है ये ऐसी सत्ता आती हो जाती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो है मन मुटाव नहीं होता। दिल जो है हम लोगों के उसी तरह रहने चाहिए, आपस में मिलजुल करके। और विपक्ष के पास है क्या सर? डिप्टी चेयरमैन सर, विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ संसद में बोलने के लिए। उसके पास ना ऑफिस है, ना दफ्तर है, ना ऑर्डर करने के लिए फाइल है, कुछ तो नहीं है। सिर्फ अपनी बात कह सकता। अगर वो बात कहने का भी अवसर विपक्ष को ना मिले तो फिर विपक्ष के पास रह क्या गया? तो ये जो है संसद में ही होना चाहिए कि नई बिल्डिंग में नए बड़े दिल के साथ जाएं, कटुता छोड़ें, शत्रुता छोड़ें, हैं, मिलजुल के और काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। 1 मिनट सिर्फ लास्ट मेरा है। और परिवार की तरह रहें, क्योंकि दुश्मनी 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, उससे क्या फायदा? राजनीति में दुश्मनी की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। और लोग तो लगे रहते हैं, चारों तरफ लकड़ा रहे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ आ रहे हैं? तो यहाँ लोग जुटे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ वो ये करके। और जो भी आता है, चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें, सबको एहसास होना चाहिए कि जो है ना कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। ये सब एहसास हमें रहने चाहिए। तो बस जो संकल्प है नई संसद में जो हम जा रहे हैं, तो उसका ही होना चाहिए। मैं उसको स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि वहाँ जाके हम अपने मन बदलें, दिल बदल के बैठें। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आके हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, महंगाई पर काबू करें, युवाओं को रोजगार दें, सबको न्याय दें। एक और बात कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, वो काम नई संसद होना चाहिए। राजीव जी, अनेक और वक्ता हैं, प्लीज। और आपके माध्यम से इस बिल्डिंग का उपयोग क्या हो? ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, यहाँ सब कुछ हुआ, सबने बताया, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा? इसके उपयोग पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट बन के ना रह जाए। धन्यवाद। संसदीय कार्य के लिए किसी न किसी कार्य धन्यवाद माननीय राजीव जी, धन्यवाद। माननीय फौजिया खान जी, माननीय फौजिया खान। सर, ये लोग हैं। जिस इमारत में हम आज जिसको अलविदा करने जा रहे हैं सर, ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है सर। ये हमारे संसदीय परंपराओं का खजाना है। ये हमारे प्यारे भारत के सपनों का गुलिस्तान है सर, जिस इमारत को आज हम अलविदा कह रहे हैं। सर, the soul of parliamentary democracy dwells here. It is through this parliament that India has lived by our constitution. Sir, Constituent Assembly में 15 महिला सदस्य थे। उनमें से एक महिला सदस्य दक्षिणयानी वेलियंदन, इन्होंने कहा था, a Constituent Assembly not only frames a constitution but also gives the people a new framework of life. Sir, it is by this framework of life that we are living in this parliament. This is certainly, sir, not like an old faded garment which we discard and it is replaced by a glittering attire. This institution has a history. It has sanctity. The soul of democracy, sir, is important. डर ये है कि कहीं सर जब हम अपने इमारत का शरीर बदलने जा रहे हैं तो कहीं लोकतंत्र की आत्मा यही न रह जाए सर, ये डर है। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The first general elections under the new constitution were held during the year 1951 and 52, and the first elected parliament came into existence in April 1952, sir. Since then, this parliament has been the custodian of democracy. Sir, this has been the custodian of the dreams and aspirations of the people of India. This has been the custodian of the rights of men and women and children, sir. This has been the custodian of equality and justice. Several prime ministers have led this country. Several prime ministers have led this glorious nation, sir. Their vision, their contribution has made India
grow like a 75 floor skyscraper. We are a skyscraper now. But that foundation, sir, is very, very important. And this foundation was laid by Shri Jawaharlal Nehru, who was 16 years Prime Minister of India, who has been called the father of modern India, sir, who carried forward the noble ideals of Mahatma Gandhi and laid the foundation of socialist, secular values and communal harmony. Sir, we cannot forget, sir, that it was his vision of modern India and his decisions of starting IITs, IIMs. Madam, please conclude, madam. Sir, it's over. Yes, 3 to 4 minutes. जो others में 3 to 4 minutes, please. All right, sir. Sir, I will say that, coming back to the context of the present times, I will say many prime ministers have led this country. Rajiv Gandhi ji has brought about the IT revolution, sir. He has brought reservation for women in the local self-government. There are so many decisions taken. Indira Gandhi was a prime minister who broke Pakistan into two. वो आयन लेडी जिसकी वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं, सर. ऐसे Sir, please give me a minute at least. Please. It's already 4 minutes, madam. Please give me a minute, sir. This has been the time which has been allocated here. 3 to 4 minutes, please. Please cooperate, please. Should I conclude or Please, should I please stop? conclude. Please conclude. Okay, sir. Last में इतना ही कहूँगी कि आज हम मन की बात कर रहे हैं. आज सरकार मन की बात करती है, लोग सरकार के मन की बात करते हैं. सर, लेकिन हमारे जो तिरंगे के रंग है, आज वो सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं, सर. जो 3 रंग है वो नहीं दिख रहे हैं. शायद कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है, क्योंकि सर ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आज जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जो सीबीआई है, ईडी है, हमारे जो अलग अलग ऑटोनोमस एजेंसीज है, आज उनको एक ही रंग नजर आ रहा है, सर. थैंक यू मैडम. इट्स ऑलरेडी 5 मिनट्स. 3 मिनट के बजाय 5 मिनट आप बोली. थैंक यू. डॉक्टर रामगोपाल यादव जी, प्लीज. हिट करने को लगे तो श्रीमान, समय तो है नहीं, टॉपिक ऐसा है जिस पे पूरे दिन बोला जा सकता है, लेकिन बहुत जो लिमिटेड टाइम होगा 2-3 मिनट का, मैं उसमें ही अपनी बात खत्म करूँगा. हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यात्रा यही है. यात्रा की बिगिनिंग होती है, यहाँ से शुरू की थी, कहाँ पहुँचे, अभी ख़त्म नहीं हुई है. नेहरू जी से चले, मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है. मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा. ये ज्ञान में देने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ. एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए. समाजवादी युवजन सभा के लोग, जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखाए थे. नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे. लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी. हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं, हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं. नेहरू जी ने, तब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं. नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ. बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी. कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए. आदेश वापस हो. एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे थे. पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे. पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है. तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, और दाखिला किया. फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे. मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस अब 300 दिन से ज़्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि
स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज़्यादा हो गए, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसमें नहीं करने जा रहे। और 2 उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना। पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए, हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, तो स्वागत गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला, तो कब तक चलता रहा। कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी हो। तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था। सारे देश ने देखा कि नहीं आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए, तो एसपी जी ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहाँ। इसलिए अब विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नए सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोट की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं। इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था। क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके? सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है। कानून बनता है कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। कानून सारे देश की जनता को आतंकित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बने, अपराधियों पर लगना चाहिए, आर्थिक अपराधियों पर लगना चाहिए, लेकिन कहीं व्याख्या नहीं है जिस पर चाहें, जिसको चाहें उस पर पुलिस जाके पकड़ लेगी, ईडी पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। क्या ये संविधान की मंशा संविधान निर्माताओं की इस तरह के कानून बनाने की रही थी? कभी नहीं रही होगी। बहुत डेमोक्रेट थे और सारे लोग थे, और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानून नहीं बने। कोटा बना, टाडा बना, सब बने, लेकिन वापस हुए कि नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े आदमी थे, अडवाणी जी थे, यहाँ उस सदन में इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में, डॉक्टर लोहिया रहे और पहले रहे। संविधान सभा में तो थे ही सारी इंटेलेक्चुअल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने। कल यहाँ से आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हिरेन मुखर्जी, यहाँ भूपेश गुप्ता, तो जाने कौन कौन रहे, हर क्षेत्र के लोग रहे, बहुत बड़े लोग रहे। कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए कि हम जिन कानूनों से आम लोग डरने लगे। आम लोग जब कानून से डरने लगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इस सदन में, इस संसद में मैं 30 साल से ज़्यादा रहा, लगाव तो है ही। अब कल दूसरे में चले जाएंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि नए संसद भवन में जो भी आगे चल के नए लोग आएँ, उनमें से कुछ बड़े लोग पैदा हों और देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को ठीक रास्ते पर ले चलें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका वही लगाव वहाँ भी रहेगा, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष दिन है, और वो दिन जब ये सदन आखिरी बार बैठ रहा है इस बिल्डिंग में, और 24 घंटे बाद इस बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाएंगी, और 75 साल का जो काम हुआ है वो आगे चलता रहेगा नए बिल्डिंग में। मैं अपना वक्तव्य, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 मिनट है, अपना वक्तव्य जो है हमारे देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, संविधान सभा के सारे मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया, उन सबको मैं नमन करते हुए अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। मान्यवर, 75 साल और 3 मिनट वो करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे सामने मेरे 2 वक्ता ऑलरेडी मेरी पार्टी के बोल चुके हैं। 75 साल में बहुत कुछ हुआ है,
और बोलना शुरू किया जाए तो खत्म होने का नाम न लेगा। मगर 75 साल में जो चीज कर सके थे, एक चीज छूट गया मान्यवर। इस सदन में एक वो चीज छूट गई है जो अगर शायद हम कर जाते तो शायद पूरा लगता कि आज हम कुछ पूरा करके वापस जा रहे हैं नए सदन में, ये एहसास होता। वो क्या छूट गया मान्यवर, क्या रह गया? 1996 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब आया था उसको पारित नहीं हो पाया। 1996 में आया, 1998 में आया, 1999 में आया, 3 बार इसी पार्लियामेंट में, बट पारित नहीं हो पाया। फिर मान्यवर ये वो वुमेन्स जो कि 9 मार्च 2010 को इस सदन ने पारित किया और लोकसभा में भेजा कि हमारी महिलाओं को इस देश के 33% संरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं में। अगर ये उस दिन पारित हो जाता तो शायद 75 साल में जितना काम किया है उन 75 सालों के साथ अगर ये जुड़ जाता तो मुकम्मल लगता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हम आज ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 9 मार्च 2010 को इस सदन ने, इस राज्यसभा ने पारित किया था और आज लंबित है, क्या उस पर हम शपथ लेके ये पढ़ लें और सरकार से दरखास्त करें कि मुकम्मल अगर करना है तो महिला संरक्षण बिल को पहले दिन नए वाले बिल्डिंग में लाइए। हम सब मिलके जो है उस दिन को स्वीकार करेंगे, स्वीकृत करेंगे, साकार करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए ये प्रण ले सकते हैं। अगर ये प्रण हम ले सकते हैं, ये विचार ले सकते हैं, हमारे 66 करोड़ मां और बहनें जो वहां पर देख रही हैं हमें, उनकी एक सोच है, उनकी एक मंशा है कि पिछले 27 सालों से जो लंबित है अगर उसको मुकम्मल करना है तो एक सोच, एक नए विश्वास, एक नए ऊर्जा के साथ हम चलें। क्योंकि एक छोटा सा विषय कह के अपना बात रखता हूं, समय समाप्त हो चुका है। हम तो चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते रहे, कारवां बनता रहा, कारवां बनता रहा। मान्यवर ये सदन 75 साल का जो एक जर्नी रहा है, ये सब एक साथ मुकम्मल होके चले हैं। मगर एक विश्वास है कि हम हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, 66 करोड़ उस लोगों के लिए आज तक भी हमने कई प्रोमिसेस किए हैं, उसको साकार नहीं किया है। ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो सदन ने पास किया था, इसको नए सदन में लाइए, पारित करिए और जो विश्वास एक नई भारत का हम देना चाहते हैं, उस ऊर्जा के साथ, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और देश नहीं पूरी दुनिया में जब हम नंबर 1 बनने का काम रखते हैं, इस विश्वास को कायम करें। अगर ये करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सच में सोचेंगी कुछ ऐतिहासिक हुआ था। सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, सोच ने आता, विश्वास ने आता, एक नया आयाम था कि हम महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए भविष्य की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Honorable members, this is indeed a momentous occasion, and the House has the benefit of having 2 of its members who had the occasion to be Prime Minister of this country. And it is gratifying for all of us that both of them were present. I will now give floor to Sri S.D. Devgowda. Kind permission. Sir, while like sitting, to while speak. sitting. Only few minutes. Yesterday, the leaders of all political parties were summoned by the Parliamentary Affairs Minister. In that meeting, it was chaired by our Defence Minister, Sri Rajnath Singh ji. Sir, in that meeting, some of our friends from the neighboring state, on the Kaveri issue they raised. I didn't raise any objection while they were speaking. It is my misfortune for having served in this parliament for 40 years. Yesterday, all electronic media in Karnataka, it was highlighted, they was not interested
to protect the interest of the Kaveri waters, which the people are suffering today. I don't want to go to the merits and demerits of what is going on, what all the people from Tamil Nadu, which was fought from last 60 years, the battle, I don't want to go back to all those things. Sir, I would like to just only one point. Whatever the unity that they have been exposed. When Kharge was speaking, I was watching. Your good self said, I will give opportunity for all the members, few minutes. So lastly, I have come here with your kind permission. I only say, I would like to stand by the problem that has been created by the unity of our friends. Yes, they have the majority, 40 members. We are only 26 or 28 members. There is no unity among ourselves in Karnataka. The people are suffering, but I would like, as a single member whom I have fought the battle from last 60 years. Sir, I don't want to go back to all those old histories. My friends knows this. When Manmohan Singh ji was the Prime Minister, what has happened? I do not want to take much time. Just only one word I would like to say. This quarrel will not be solved legally. If at all, if our friends wants to have some sort of smooth understanding, let all of us sit together and sort out the problem. Otherwise, things will continue and the struggle from both sides will go on, and this will not going to solve the problem. This type of fight on both sides. I only, with a humble request, I pray all our colleagues from Tamil Nadu are, unfortunately, Karnataka is surrounded by all the projects. On one side Goa, on the other side what is Telangana, on this Almaty issue and Kaveri issue. Sir, we are the people who are suffering now. I only pray this problem will not be solved unless we sit together, try to sort out the problem ourselves. Legal battle certainly will not going to solve this problem. We have 200 years back the issue started on Kaveri. I don't want to take much of the time. I can go on, give all by the details. You have permitted me. I only say what I would like to say. I also stand by the people of Karnataka who are suffering, and I will pray all our colleagues, if they are going to sit together and solve the problem among ourselves, it will be one of the most brilliant issues, sir. I only pray all of our friends. All the rivers are surrounded. Karnataka is the worst sufferer. That's the position, sir. Sir. Only I request. I don't want to make any. It's already settled the issue. The issue has been already settled based on the Supreme Court direction. Tribunal has been formed, tribunal has been ordered that Karnataka not obeyed. Karnataka not obeyed the tribunal's order, Supreme Court's order, and we have respect on him. We have respect on the former Prime Minister Devagowda. But it is a sympathy has been created in this house. I'll come. Lot of suffering. Okay. Tamil Nadu farmers Please. are suffering. Lot. You see, on this day, when we are trying to reflect, like to, introspect, and chalk out a path for way forward approach. Let 5 members of this house. Sir, I get your point. Sir, settle down. please, let 5 members of this house, please, let them send go. a chit to me. And, Sir, sir, Prime Minister, but our farmers. One second. Sir, I would like to request, let 5 members of this house on both sides, not belongs to either Karnataka
or to No, Tamil Mr. Nadu. Vaiko, Mr. Vaiko, please. The 5 members of Would this you House. please take your seat, all of you? You please, Please. delegate Take them. your seat. One Let second, them one go second. and see the Vaiko ji, condition, please. what the Please. people are suffering. Please. And then let them report to this House. I will accept that. Sir, let us not unnecessarily quarrel. Please. Those people who are not concerned about this problem, please, sir, I beg of you, the members who are not concerned, let them go and study the situation, what is there, and then report it back to the House. Honorable members, I will accept it. This is not the way. What is it? Because of your strength, you have got 40 members, you are united, and we are divided. Now, would you please? Advantage you want to. Would you please be good enough in taking your seat? Taking your seat. Take your seat. Not going to solve Please, the problem. please, take your seat. Let me see. Take your seat. This is not going to solve the problem. If they want to go on like this, let them go Honorable on. members. This is not going to solve the Honorable problem. members. And I will say, I do not wish to. I am 91. I don't know how many years I am going to survive. Only I only made an appeal. 5 members of those people who are not belongs to Karnataka or Tamil Nadu, let them go and study the situation. Report to your good self. Sir, first you finally decide. First, we I all beg of you. The request I make. Thank you very much. We all wish. One second. We all wish Devgowda ji a very long, healthy life. And honorable members, I was carefully listening to every word which the former Prime Minister spoke. The underlying concept was that these issues need to be determined consensually. That being the situation, we must leave it at that. Shri Pramod Tiwari. माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। कल हम सब नए भवन में जाएंगे। ढेर सारी व्यक्तिगत यादें यहां से जुड़ी हैं और देश के इतिहास को देखें तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम सब उस सदन के सदस्य हैं जिसने इस देश का गौरवशाली इतिहास रचा है राज्यसभा में। माननीय कैसे भूल सकते हैं हम इस संसद भवन को 14 और 15 अगस्त की रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण, जब आज़ादी का उद्घोष हो रहा था तो उन्होंने कहा था जब सारी दुनिया सो रही है तो उस समय हिंदुस्तान जाग रहा है एक नया डेस्टिनी, एक नया अध्याय लिखने के लिए। ये साक्षी है उन घटनाओं का, ये साक्षी है संविधान बनाने का। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा कि 75 साल 2 साल पहले पूरे हुए या 75 साल 2 साल बाद पूरे होंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसके निर्माताओं को प्रणाम करते हुए कि आपने एक ऐसा संविधान दिया। इस संविधान की खूबसूरती के लिए तो मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि भारत का नक्शा देखें। भारत में लोकतंत्र पहले दिन से जिंदा है, 15 अगस्त 1947 से आज तक जिंदा है। एक क्षण के लिए यहाँ लोकतंत्र कभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जरा भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, बगल में नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था, ये उसकी खूबसूरती है कि आज तक हमारा जो सबसे अनमोल रतन था लोकतंत्र, वो जिंदा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों सदन साक्षी हैं उस घटना के। माननीय मैं एक चीज जो कहूँगा, कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बेतुका बोलने की, बेसुरा। रुक जाओ मानवर, मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जब ये बोल दिए तो इनको बता दूं, उस आपातकाल को संविधान के दायरे में लगाया गया था। आपने जो लगाया है उस संविधान के दायरे में नहीं, बल्कि संविधान का ताना बाना पहन के लगाया है। और आज
आपातकाल जैसी तिवारी स्थिति। जी, कई बार प्यार से बहुत डर लगता है। सही बात है सर, अपना अनुभव है? अपना अनुभव, अपना अपना अनुभव। देखिए, यदि अगर हम आज के दिन राजनीतिक दायरे में रहकर बात करेंगे तो आगे का रास्ता साफ नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा सर। आज की हकीकत जब मैं यहाँ सुनता हूँ और दुनिया के लोगों से सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं कहाँ आ गया। सर, Let us be proud of our accomplishments. They are product of our human resource, sir, our bureaucratic system, sir. our visionary leadership. Where is the harm in it? मैं वही काम कर रहा था, बीच में विघ्न हो गई। नहीं, आप वो नहीं कर रहे। मैं तो तारीफ कर रहा था लोकतंत्र के निर्माताओं को, संविधान के निर्माताओं का। ठीक है सर, विघ्न कौन डालते हैं आप भी जानते हैं, हम भी डालते हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है सर? ये एक ऐसा चमन है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हर रंग के फूल को जब खिलने दिया जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं फिर किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बूटी यही थी कि यहाँ हर धर्म को, हर भाषा को, हर जात को फूलने फलने का अधिकार मिला था। और जब धर्म के नाम पर हुकूमतें बांटेंगी लोगों को तो लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगेगा और जिन्होंने ये संविधान बनाया है उसके प्रति अनादर का भाव जाहिर होता है। मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि जहां हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि आज भी हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, आगे भी रहेंगे, चाहे जितने दौर आए आके चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं मिटेगा, ये मैं विश्वास पूर्वक और दावे पूर्वक कहता हूं। अनवर, जब इतिहास पढ़े तो एक लाइन में ये कह के बर्खास्त न कर दें कि 70 सालों में क्या हुआ था। अरे 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली थी तो हिंदुस्तान के पास क्या था? कितने गांव में बिजली थी, कितनी हम बिजली पैदा करते थे, कै गांव में हमारा टेलीफोन सेवाएं थी, कै गांव में मानवर विकास के लिए सड़कें थी। आज अगर है तो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, इसलिए आज ये दौर आया हुआ है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब गौरवशाली इतिहास पढ़ा जाए तो प्रधानमंत्री नेहरू के किए कार्यों की सराहना के बने हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रहेगा। उन्होंने जो योगदान दिया, शास्त्री जी का संक्षिप्त कार्यकाल था। आपको बधाई, शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप याद रखेंगे कि अभी मेरा 10 मिनट बाकी। धन्यवाद। मानवर, भूल गए हो तो मैं बता दूं, मानवर शास्त्री जी का, मानिया जी, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था। 18 महीने में उस शख्सियत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखे जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तब वो हिंदुस्तान था, तब वो हिंदुस्तान था जब युद्ध रोकने के लिए 65 का हम पर PL 480 की धमकी दी गई थी, उससे भी हम निकले। मानवर, इंदिरा जी के बगैर इंडिया का इतिहास अधूरा रहेगा। अरे ये वो इंदिरा गांधी है जिसने महिला सशक्तिकरण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। अरे लोग तो इतिहास में कुछ पन्ने लिखते हैं, उन्होंने तो ज्योग्राफिया बदलकर दुनिया के नक्शे में जब तक बांग्लादेश रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। और इंदिरा गांधी की कोई ताकत तो थी, इंसानियत थी, शराफत थी, संसदीय मर्यादाएं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना दुर्गा मां से की थी। ये है देश का लोकतंत्र। मानवर, आज बड़ी बात होती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसका जन्मदाता कौन था? राजीव गांधी। क्या हम उनके योगदान को भुला सकते हैं? पिछड़े वर्गों को, दलित वर्ग को, महिलाओं को अगर पंचायत राज में, नगर निकाय में आज वो मेयर के पद पे बैठी हैं, बड़े बड़े पदों पे जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी हैं, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान है उसमें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, आज युवा आभारी है। 18 साल के नौजवान को अगर मिला है तो इन्हीं 70 वर्षों में मिला है मताधिकार। मानो मैं आगे बात बढ़ाऊं अगर तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, PV नरसिंह राव जी ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने उसको परवान चढ़ाया। आज भारत की जो ताकत है ना दुनिया में,
वो सपनों से नहीं आई है, इन दोनों के उदारीकरण के कारण आई है। हम इनके योगदान को नहीं भूल सकते। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, उदारीकरण का जो आज स्वरूप है वो उधारीकरण और बेचीकरण में तब्दील हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। हमारा उदारीकरण और बेचीकरण के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मानवर, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संविधान की तीसरी सबसे बड़ी मर्यादा है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ वही, आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के मिलकर ही ये संघ बना है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, इतना विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ आपसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं आप गोवा में, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में गिराते हैं आप, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में गिराई जा रही है, यह खतरनाक लक्षण है जिसका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। वही आपातकाल की तानाशाही जो बिना लगाए आई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कम करना चाहता हूं, 2 बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट, कि एक खतरनाक बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, दिल में सबको अच्छी लगेगी, मेरी 2 ही मिनट की बात थी, सबको अच्छी लगेगी लेकिन बोलेंगे नहीं पार्टी प्रतिबद्धताओं से। पहले सांसद के अधिकार होते थे, विधायक के अधिकार होते थे, मंत्री के अधिकार होते थे, इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती थी। आज इन तीनों ताकतों को, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है, ये एक खतरनाक लक्षण है, ये उचित नहीं। हमारी सोनिया जी ने, कृपया खत्म करें, आपका हम जो बात कह रही है आपको अच्छी लगेगी। सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है 9 पॉइंट, बहुत अच्छा है, आप भी पढ़ लीजिएगा और इनको भी पढ़ा दीजिए, कह दीजिए उसको मान जाए तो 75 साल का सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। ये कहते हुए, जो लोग लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं वो इंडिया आ रही है और आप जा रहे हैं, ये उद्घोष करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आप समाप्त होंगे, देश अब आपको नहीं चाहता। इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, दूसरा नाम दीजिए। माननीय विजय सिंह रेड्डी जी, विजय शाही रेड्डी जी। Thank you, Deputy Vice Chairperson, sir. Madam, in many ways, the parliamentary journey represents so many struggles and so many achievements and also aspirations of people of India. And I have no hesitation to refer to the struggles that I have undergone during the 75 years, more particularly the struggles relating to the 1976 represents the darkest year of our parliamentary democracy, and the Congress party was responsible for it. Sir, the 42nd Constitution Amendment was passed by the then ruling Congress party in a most controversial circumstances. This has to be taken note of, madam. If the subsequent governments had not undone the horrors that have of the 42nd Amendment, the Congress party would have passed an unsavory laws to institutionalize the emergency in the country forever. So it is because of the anomalies that they have introduced have been undone. That is the reason why we are still here and our democracy is saved. Madam, the UPA regime was marred by capitalism, corruption, policy paralysis, and decline in economic growth. This is what their achievement is. The struggles I have already explained.
and their achievements I have already explained. And more particularly, in relation to Andhra Pradesh, what Congress party has done during the bifurcation has to be explained. Madam, despite protests, Andhra Pradesh reorganization bill was passed in a most unruly manner, and which is a black mark for the democracy, and Andhra Pradesh hence was the biggest victim of the misuse of power by the Congress party. Madam, the live telecast of the parliamentary proceedings were cut off. A demand for the division of voting has been denied. All Andhra member of parliaments were unfairly suspended, and doors of Lok Sabha were closed. The passage of Andhra Pradesh reorganization bill was based on unscientific, irrational considerations, which has been authored by my friend Jairam Ramesh ji. Madam, the next point, you can go ahead with your comments, but I'll continue my observations. Madam, the governments may come and governments may go, but for sitting government, that is BJP government, is under an obligation to fulfill the statutory promises made by the previous government, that is Congress government, madam. Madam, the Congress party, one important point, madam, the Congress party has held the power for 50 years. 50 years out of the 75 years, and if any other party had years out of the 75 years, and if any other party had been in place other than Congress party, I have no hesitation to say that India would have been a developed country by now, not a developing country, madam. It would have been a developed country. That is the achievement of the Congress party, insofar as democracy is concerned. This, you can go ahead. The evidence of this is in front of our eyes now. Madam, the non-Congress government in the past 10 years, you have been seeing, we have been watching, and what the performance is. Madam, parliamentary productivity. Average number of sitting days per year has decreased from 120 in 1950s to roughly 70 days at present, which is really alarming, madam. Madam, I'll have to give the comparative figures. In 2022, the Indian Parliament sat for 56 days, and US Congress sat for 158 days, and British Parliament sat for 137 days, and the Canadian Parliament sat for 96 days. I request the BJP government to increase the number of sittings of the Parliament so as to make the justice to the country, people of this country, madam. Madam, there is madam, youth particularly. The youth at present, the significance of youth and importance of youth is coming down slowly, and the participation in youth is also coming down. MPs in 25 to 40 age bracket has fallen from 26% in first Lok Sabha to 1 to 12% in 17th Lok Sabha, madam. Madam, welfare of backward classes. I request the government, Honorable Finance Minister is sitting here. I request the Honorable Finance Minister and also Prime Minister and BJP government to introduce reservation for BCs based on the population of BC population in this country. BCs constitute more than 50% in this country. Therefore, the reservation has to be given to the BCs based on the proportion of population. And no caste census has been conducted, and the last caste census has been done in 1931. Socio-economic population data on BCs has been released, madam. Madam, women reservation bill. The women constitute 50% in the population. YSR Congress party, under the leadership of Jagan Mohan Reddy Garu, right from day one, since inception of the party, has been demanding reservation for women, and as of today, in the state assemblies, the percentage of women is only 8%, and in Lok Sabha, it is 15%. Women, therefore,
the women reservation bill has to be passed. We request the government of India to, BJP particularly, to pass the women reservation bill. Madam, in fact, even in the yesterday's meeting, yesterday all-party meeting has been held, wherein my colleague, my friend from Andhra Pradesh, MP, has vociferously raised the issue of arrest of Chandrababu Naidu. Though it is not relevant here, since he has raised the issue in the all-party meeting, and also he is going to raise the issue again on the floor of this House, I have no other option but to address this issue. Madam, Chandrababu Naidu has been arrested by the CID department of Andhra Pradesh government on the charges of corruption in a particular case relating to Siemens India. And there is an ample evidence which has been produced to the court, and court has remanded him to judicial custody. Now that arrest has been made and the remand has been given by the judiciary and the court proceedings have started, it is for the court to decide. And court has also observed that there is a prima facie case against Chandrababu Naidu, and the court will decide the matter. Madam, it is not only, it is Chandrababu Naidu who, this is the book, madam, this is the book. Chandrababu Naidu has resorted to corruption of 1,44,577 crores. This is a old book, and subsequently, this amount of corruption, the quantum of corruption has gone up to 6 lakh crore, madam. And again, madam, it is not one case or two cases against Chandrababu Naidu. There are number of cases. It is his own affidavit, madam. It is his own affidavit which has been filed before the Election Commission, wherein he has stated that there are 9 cases against him, 9 criminal cases against Chandrababu Naidu. Therefore, when he himself has declared that there are criminal cases against Chandrababu Naidu, I have no hesitation to call Chandrababu Naidu as a criminal, madam. He has been implicated in a criminal conspiracy and resorted to corruption. Therefore, he has been implicated in the corruption case, madam. One more point, madam. Madam, he has not only that. Politically, Chandrababu Naidu has backstabbed everybody. He has backstabbed BJP. He was with BJP, he has backstabbed. He was with Congress party, he has backstabbed Congress party. He was with communists and he has backstabbed communists. So therefore, there is nothing wrong in calling him as backstabber, madam. And he is the king of all scams. I have no hesitation to say that he is king of all the scams. This is the fate of the democracy, and therefore this type of politicians, particularly who has ruled the state of Andhra Pradesh for a period of 14 years as a chief minister, has spoiled the state of Andhra Pradesh, and the Andhra Pradesh is looking backward only because of Chandrababu Naidu, madam. Thank you very much. Thank you. Please, Shri Samir or Rao. आदरणीय उपसभापति महोदया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है। महोदया, सांसद भवन भारत के वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों तथा देश की समस्याओं पर चिंतन मनन के साथ ही शासन चलाने के लिए विधान निर्माण का एक केंद्र रहा है। महोदया 1927 में बनकर तैयार हुआ संसद भवन 1947 तक ये अंग्रेजों के गुलाम में रहा था। 1947 से लेकर के आज तक यह संसद भवन आम जन के लिए होने वाली नीति का एक प्रमुख केंद्र बनकर ये काम निरंतर कर रहा है। महोदया,
ये संसद भवन देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस संसद भवन में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की संविधान सभा की बैठकें हुई। तत्पश्चात 1950 में भारत के संविधान को इसी भवन में लागू किया गया। महोदया, संविधान लागू होने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया। यह तीनों ही भारतीय संसदीय प्रणाली के अभिन्न अंग बनाए गए। मुझे गर्व है कि मैं इस राज्यसभा के सदस्य के रूप में इस सदन का हिस्सा बना, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में राज्यसभा ने संसद के अस्थायी सदन के रूप में कभी भंग हुए बिना निरंतर देश की चिंताएं ये करता रहा है। परंतु महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने पूर्व में इस सदन का बहुत सारे उपलब्धियां और बहुत सारे जो अनुभव है इन बातों को बताने का काम किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं जो अनुभव करता हूं उसमें यह भी है कि बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां तो हुए, यहां बहुत ऐसे विद्वान माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां पर विचार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हुए जो कि इस सदन के अंदर में यह सदन जो गवाह बना हुआ है, जो कि बहुत से सारे ऐसे गरिमाएं भी खंडित हुई है। महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से यह जो है अगर हम कहें तो इस सदन भवन के अंदर में जो है आपातकालीन जैसी जो बातें हैं वह भी मतलब यह सदन ने देखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 370 जैसे जो एक समस्या थी, अगर उन दिनों में ये नहीं रहता तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये अलग नहीं होता। इसी प्रकार से ये लगातार ये 75 वर्षों में सदन ने अनेक उदाहरण है जो कि इस प्रकार से चीजें हुई है। मैं जनजाति मामले के विषय में भी मैं जब विचार करता हूं, देखता हूं, तो 1969 में सदन के एक माननीय तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने जनजाति हित के लिए एक विशेष बिल जो लाया था, वो बिल भी उस समय के कौन से ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस सदन के अंदर दफन हो गया। महोदया, इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीच के समय में हमारे इस सदन के अंदर में भी एक अच्छे उदाहरण, अच्छे जो है अचीवमेंट जो हुए हैं, जो मैं बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार ये जनजातियों के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मामले का मंत्रालय का स्थापना किया और ये जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के योजनाएं हुए। महोदया, उस समय जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आदिवासी बच्चों का ठीक से पढ़ाई हो, ज्ञान हो और जो है अपने बढ़े, अपने परिवार को बढ़ाए और देश के सेवा में भी वो शामिल हो, आगे बढ़े। इसलिए ऐसे जो है महत्वपूर्ण एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना करके आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो है देश के आजादी के लड़ाई के लिए लड़ने वाले जो है उन दिनों के जो है जो अनसंग हीरोज थे आदिवासी, उन लोग के नाम से भी जो है संग्रहालय बनाने का काम किया और जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 15 नवंबर के दिन में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का यह काम प्रारंभ हुआ। देश के जनजातियों को भी सम्मान मिलने का काम इसी संसद में यह गवाह रहा है। महोदया, ये मैं बताना चाहता हूं कि जनजाति लोग जंगल पहाड़ों में रहते हैं, ये जो है
FRA, CFR जैसे जो है प्रावधान किया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत सामुदायिक जो है वनाधिकार का यह प्रावधान जो हुआ है, आज जनजाति अपने वन क्षेत्रों के में अंदर में रह करके कैसे जो है जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को संकलन करके संकलित करके अपने जो वैल्यू एडिशन करते हुए अपने आमदनी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आदि आदर्श ग्राम विकास योजना करके जनजातियों के गांवों में किस प्रकार से सभी प्रकार के विकास का काम हो, इसके लिए ऐसे योजनाएं किया है। और तो और ये जो है आदि महोत्सव जैसे जो है योजनाएं करके हमारे जनजातियों के जो वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद है उसको कैसे हम ट्राइफेड के माध्यम से हम उनके आमदनी को बढ़ाएंगे और जो है आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से जो है योजनाएं प्रारंभ किया है। महोदया, कहने को बहुत है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सदन ने इन सारे चीजों का गवाह बना है और आज हम इस सदन से कल दूसरे नए सदन पर जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये नए सदन में भी बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित हो, ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अब्दुल बहाक जी। All the praises to Almighty God for giving me a wonderful time to be here at this last moment of this last Rajyasabha in this hall. My leader, two leaders were here in the first day of this building when it started in 1952. There's Qaid-e Millat Muhammad Ismail Sahib and B. Poker Sahib. They were in the Constituent Assembly also. So now our party also completing 75 years, Amrita Kal. November 16th, we are coming to Delhi to inaugurate our new office, and also to us also this is Amrita Kal. And this building, it is very, very dear to me also because my leaders came here first day itself in Rajyasabha, and now I am also in Rajyasabha. So many people predicted 75 years Indian Union Muslim League will be here. Yes, we proved that we are here, we are very much here, and we are looking after the minorities, causes, and the Dalits and what you call SC/STs. We are working heavily in our area in skill development for minorities and for Dalits and for SC/STs. Thank you very much for giving me a time of this one. Before, I think when our chairman is coming, we will get some more time. Then Kharge, I only just now started. I don't know, in between the transition came. Just now I started only. So I was telling, for your information, this is a wonderful moment for me, especially personally, because my leaders came here first day. Now the last day also I am here. So I will be here till the end of the session, just to say bye-bye Rajyasabha. Bye-bye Rajyasabha, I will be here. Thank you very much once again for giving me the wonderful chance. Thank you all. We hope the very best in new Rajyasabha. Thank you. Shri Narayan Das Gupta. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on this special session on a very important subject. Sir, I would like to share that this Parliament building, which is a historical landmark that has guided India's destiny before and after independence. That is that this house, which was constructed in 1927, it was occupied originally by the Imperial Legislative Council from 2027 till 15th August 47, and after that by the Constituent Assembly till January 50, and then thereafter we are occupying this. This independence was achieved after sacrifice by our forefathers and leaders, and the constitution which was laid down and adopted in 1950, it has given
the rights to the citizen, every citizen of this country, of liberty, of the free speech, justice, and to promote the fraternity among the citizens. And there's a lot of this development has taken place in the last 75 years. That it may be on account of agriculture, it may be on account of IT, it may be on account of that power sectors, industry sectors, and the cooperative movements that has taken place. And during this period that this country has won the war also, that is a war of 1971, Bangladesh, and this constitution which has provided the liberty and that the rights to the citizens. I would like to say, sir, because this is a system which has been provided in the constitution, the federal system, because that the powers has been defined between state and center. But what we have seen, because I am from the I.N.D.I.A party, which came into being in 2000, 10 years back, 2012. And after that, it has constituted 3 elections in Delhi, and every time it has formed the government also. And because this is my first tenure, even my party was the first time in this house as Rajyasabha members. And I was nominated by our Chief Minister, Sri Arvind Kejriwal ji. And I will express thanks for that, considering me as a member of this house. Sir, every time I would like to share that in 2015, the first time we had contested and got 67 seats out of the 70 of the assembly total number of seats. It was almost 95%, it was the unprecedented victory. But what we have seen, the moment we have this, our government that was, and Chief Minister took oath in February 15, in May 15, through notifications, the power which were available and given as per the Delhi State Act, they were withdrawn. I think it was a very, I will say, it is contrary to what provided under the Constitution rights, and the separate powers has been defined, both for the state and central government. And again, there was an election in February 2020. Again, there was an unprecedented victory that the Delhi people, they just voted for the I.N.D.I.A party government. And again, it was the 86% out of the 70 seats, total number of seats, that we won 62 seats. This was again, I will say, unprecedented. That was the faith and confidence expressed by the citizens of Delhi in the I.N.D.I.A party government. But what happened, sir, we have seen only in the last session that first through ordinance, the powers what were given under the Delhi State Act, they were withdrawn. Later, bill was introduced here, and it was passed. And this is total against the federal system of the country. I think this is contrary what is provided there. And what I would like to say here, that this type of attitude, this type of behavior, this type of system which is prevailing here, this should be that we should go according to what provided under the articles of the Constitution. Even there was an amendment in the Constitution articles also, besides the Delhi State Act. This is again the federal system, cooperative system of what is defined there. But what I like to say, but the way this Parliament building, this is a historical building, it has been shared by our earlier speakers, and that has guided India's destiny before and after independence. This is that because of these constitutions and the provisions, and which was laid down by the writer of this constitution, the architect of this constitution, Ambedkar. What I will say that we should go, we are
going to the new building, we should go with new thoughts and have, with a full confidence. New positive thoughts. But we should go with a positive thought. Yes, I'm so positive glad, thought I'm so glad. there, and the things which have taken place in the past, we should try to avoid them. With this, thank you very much for giving me the opportunity. Shri Prakash Javadekar, not present. Shri Thambi Durai, Shri Vivek Tankha. No, he has to speak from his seat. And you are not on your seat. So actually, I'd given up the hope. So that's why I was sitting with Mr. Sibbal. So I'm going to be very, very short, sir. Why should a distinguished lawyer like you give up hope? No, it's a question of time, sir. You see, you wait till the judgment is pronounced. You are in a very sound company of Kapil Sibal ji. So you can't give up hope. Anyway, sir, what I'm going to say today is 6 hours is too short for a history of 75 years. The history starts with the Constituent Assembly sitting and deliberating over a document which was one of the most well-drafted document at that time, at that period of time, and continues to be so even today. Our Constitution, I would say, is amongst the best in the world. UK didn't have a constitution. American Constitution is a very short constitution. So this Constitution served us so well. So that is why I say Parliament is the voice of the people, which it expresses through the Constitution, and the Supreme Court is the voice of law. Now, the one good point is, sir, that roughly 105 constitutional amendments have happened, roughly. But in this history of 105 constitutional amendments, only one amendment has been struck down fully. That is the NJAC. 6 or 7 amendments were partially struck down or clarified. So the test of law has also been good for the purposes of testing the constitutional amendments, sir. Another thing I would like to say, that it is very good to see a lot of lawyers in the Constitution, sir, in the Parliament, because if you see even at the time of drafting. Vivek ji, there are very distinguished lawyers here. They contribute from outside. On the floor of the House, I have analyzed their contribution is either by absence or silence. And this is a very painful scenario, and I have no difficulty in saying, because we have a distinguished legal luminary, Kapil Sibal here. Mr. Sibal knows it. On Monday and Friday, this House is not your priority. And therefore, I would particularly appeal to the fraternity to which I belonged, that please introspect and reflect. And you see, regional consideration. Secondly, there is so much legal talent in the House of a global repute, which can enlighten the Supreme Court also as to what are the jurisdictional limits in separation of powers doctrine. Fact is that distinguished senior advocates are performing outside on television channels. Coming to Dr. Singhvi, he was on a television channel, Kapilji, talking about parliamentary working. I immediately sent to the other person contribution of the gentleman for past 10 months. Now it is nearly a year. What he has done. Therefore, when a message came to me that Kapil Sibal wants to make a contribution, obviously I should have not taken a second, and believing in the system as I do, and you know, precedence could have been given. I told my assistant, he looked at me like this. I said, let Mr. Kapil Sibal sit for some time. His presence here physically will send a good signal.
And that applied to you also. Otherwise, make a speech and walk away. I'm so sorry, but I am spelling out my heart. Let me share that in these 75 years of glorious history, lawyers and non-lawyers, everybody has contributed in a very beautiful way, sir. And see the way all your laws, as I said, have been upheld by the Supreme Court. Out of 105 amendments to the Constitution, only one was struck down fully, that is NJAC. But NJAC, Supreme Court had its own views on it, so I would not call it a truly... But one thing, and let me reveal my mind. You are a member of this House. Sir. Everyone here passed that bill, only with one abstention. Lok Sabha passed it unanimously. What has happened to that? Did this august House ever concern itself with what they have done? How can you countenance a scenario like this? It is prime obligation of everyone in this House that if this House has sanctified, and by that majority, only one abstention, and Lok Sabha, total unanimity, 16 state assemblies endorsing it, and my very distinguished legal luminaries, they have to be on front foot. I await what Kapil Sibal ji would say. Go ahead, Vivek ji. So Your name signifies everything that you have. Sir, let me try and complete my speech, sir. So I'm now taking the chairman and the House to another aspect, sir. I felt that there are three issues which need your kind attention and which need the attention of this House, sir. One is that working days, a good parliament has at least 100 working days. UK has about 100, but it should be 100 plus. Our working days have been abysmally low and getting lower and lower by the year. And out of that also, I'm not a votary who supports disruption. I'm not votary. I can never be a votary of disruption because I believe in debate. But my point is, sir, that the three suggestions I'm making, that in UK, there is a tradition and a law which has now been given a shape of a rule that 20 days out of 100 days are allotted to the opposition to make the agenda. That means if I have 20 days in 100 days, I can't blame the ruling party. If I want a certain agenda to be discussed, it has to be discussed. And out of that 20 days, 17 days are given to the largest party, but we have many parties, and 3 days are given to the second largest party. Maybe we could think of this, it may stop or reduce disruption, because if opposition parties have the authority or the right to also set the agenda of the day, they will bring the topics which they want to discuss, which otherwise the ruling party may not find very compatible. Number two, I'm saying, sir, that there should be a rule that if 10 to 20% of MPs want a motion to be discussed, it should be accepted. It is otherwise a very demeaning thing that you give it in writing, 20 people are giving it in writing, and we are not getting a discussion. Ultimately, what are we wanting? Only a discussion. So I feel that it needs a review, whether if a certain percentage of MPs make a request, it should be accepted or not accepted, but I feel it should be accepted, sir. Third is, today a special session of the parliament can only be summoned by the government. That is the law in this country. But now a lot of jurists have been saying, and it may get adopted in Europe very soon, that if 25 to 35% of MPs want a special session of a parliament for a special reason, it can get summoned. What I'm trying to say, sir, as we move into a new building, let us go for new thoughts. Let us go for new ways of dealing with problems that are going to face us or confront us very soon. It can't be a system where only the government decides. It should also not be a system where we only disrupt. It should be a system where we can also decide, they can also decide, and we can all try and work together, sir. Thank you, sir. Priyanka Chaturvedi.
Sir, not used to be called out so soon. I thought end में आऊँगी. Mic. Sir, 75 साल की parliamentary democracy. Very briefly. Very brief, sir. 2 मिनट. आदत पड़ गई है. You are right. You are right. Repeated walkout का मतलब ये हुआ है. जी सर. कि डिबेट करने की आदत नहीं है. करती हूँ, बहुत सारी करती हूँ सर, पर sides. पार्लियामेंट में करने का मौका नहीं मिलता है. करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट के बाहर करने का मौका जरूर मिलता है. Go ahead. सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 75 साल की जर्नी के बारे में चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है. ये मैं मानती हूँ जो हमारे संविधान को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने मुझे इतना सपना देखने का मौका दिया कि कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने का सपना सोच सकूं और वो सपने को पूरा भी कर सकूं. मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है. सर, 3 साल की मेरी जर्नी रही है. उस 3 साल में सेंट्रल हॉल हो या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में चर्चा हो या महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पे समय बिताने का मुझे मौका मिला हो. पूरे एक सेशन में काफ़ी घंटे बिताए थे. क्योंकि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और मैं तो एक तिनका हूँ इस समुंदर में, पर क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इस 3 साल में हमने ये भी देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, और अब 2 साल होने आ गए हैं. बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं. बाई इलेक्शंस आ जाते हैं, बाई इलेक्शंस की भी नोटिफिकेशन महाराष्ट्र को लेकर नहीं आता है. तो ये एक सेंस ऑफ कंसर्न है. नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं. हर डेकेड में 75 साल की जब हम बात करते हैं, हर डेकेड में हमने एक ऐतिहासिक बिल पास किए हैं, ऐतिहासिक कानून बनाए हैं. पर एक कानून जो मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ से हम पास कर हम नए पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, वो है महिलाओं के अधिकारों की बिल की बात सर, 33% रिजर्वेशन. पर वो मैं उम्मीद करती हूँ सर ना उम्मीद मत होइए, सब कुछ मुमकिन है. नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मुमकिन है, पर यहाँ से मुमकिन होता तो ज्यादा और इस पार्लियामेंट की शान बढ़ती सर. नहीं, इंडिया है तो मुमकिन है. तो सर मैं बस यही कहना चाहूंगी. और इसी से I got a letter from a boy of 13 years and he wrote to me that, sir, India, I.N.D.I.A, how can it be India? You'll reflect on that. सर इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, उसका जो डेमोक्रेसी का एसेंस है उसको मत तोड़ो. बस यही कहना चाह रही हूँ. बस सर वो ये पार्लियामेंट सेशंस में मैं उम्मीद है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन है, महिलाओं के अधिकारों का समय पे चर्चा होगी और वो बिल को पास किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में रहा है. और हम सब विपक्ष में हम बार-बार यही कहते रहते हैं कि अगर इस बिल पे चर्चा होगी, समर्थन चाहिए, हम सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे और ऐतिहासिक स्पेशल सेशन बनाएंगे जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी. माननीय सभापति महोदय, आज हम सब लोग इस संसद में इस देश के 75 वर्ष लोकतंत्र के होने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं. जब हम 75 वर्ष की इस यात्रा का सिंहावलोकन करते हैं तो स्वतंत्रता से लेकर आज तक के सभी बड़े निर्णय और बड़ी घटनाएं बरबस हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं. यदि हम स्वतंत्रता से प्रारंभ करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महर्षि अरविंद ने यह कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान भारत का पूरे विश्व में है. अर्थात आज से 75 वर्ष पूर्व सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पूरे विश्व की मानवता की सोई हुई आत्मा जीवंत हुई थी. और भारत की वह जीवंतता किस रूप में आती थी, यानी हम क्या थे? 2000 वर्ष से अधिक के आक्रमण, 800 वर्ष से अधिक की गुलामी,
उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता का सवेरा देखा तो हमें समझना चाहिए वो देश था कि श्री अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्या सुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पे रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वो पहली किरण देखी। मैं मानता हूं कि लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस जी की सैन्य शक्ति और बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी की शक्ति, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रेरित थे। और जब उस समय हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में ये देश ने आधी रात को नियति के साथ अपना पहला मिलन देखा, तो उसकी हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में दुनिया के कई देश तबाह भी हुए, डिवाइड भी हुए। कोरिया डिवाइड हुआ, जर्मनी डिवाइड हुआ, जापान तबाह हुआ था, इजराइल ने होलोकॉस्ट सह के एक नया अस्तित्व पाया था, चीन में बड़ा परिवर्तन आया था। परंतु हम कह सकते हैं कि हमने भी उस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब इतनी बड़ी कीमत चुका के हमें आजादी मिली तो हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए। हाँ, ये सारे देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे, ये एक दौर में बहुत तेजी से आगे हुए थे, पर आज हम कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस पंक्ति में आकर खड़े हुए हैं जब उन सारे देशों के साथ भारत की गणना अग्रणी देशों में होती है। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता मनोज झा जी ने उल्लेख किया था कि आज समाज में उतनी कटुता उनको दिखाई पड़ती है जितनी विभाजन के समय भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, विभाजन के समय कटुता की बात नहीं, दृढ़ता की कमी थी। जो दृढ़ता आज है, अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। अब 75 वर्ष के इस कालखंड को मैं ये कह सकता हूं तीन कालखंड में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 25 वर्ष 1947 से 72, दूसरे 25 वर्ष 72 से 97 और तीसरे 25 वर्ष 98 से आज का समय। पहले 25 वर्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा कि दुनिया को इस बात को लेकर संदेह था कि भारत लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र को लेकर भारत की डेमोक्रेसी, यदि ये कहा जाए, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में थी, यानी गर्भावस्था में थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी लोगों को यह शक था कि ये लोकतंत्र रहेगा, उठ पाएगा या नहीं। मगर जानते हैं किसको शक था? केवल उन्हीं को शक था जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था के बारे में नहीं था। उस गर्भावस्था के संस्कार इतने प्रबल थे हजारों वर्षों से कि मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को यह कहा कि डेमोक्रेसी आज भले ही हमारे लिए नई दिखाई पड़ती हो, परंतु हमारा इतना गहरा प्रभाव है कि उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूक्त में लिखा है, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जहां पर समिति बैठी हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई पूरी करे और उसके उपरांत ही लोग यहां पर आए। अर्थात व्यवस्था के तहत बैठकर लोकतांत्रिक निर्णय किस प्रकार से होते थे, उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया। और नेता सदन पीयूष गोयल जी ने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, चोल साम्राज्य में हमारे कई प्रतिपक्षी लोगों ने बोला गांवों में समितियों का चयन जैसे वोट के द्वारा होता था, भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम जिसमें 12वीं शताब्दी में बैठकर निर्णय होता था, वैशाली का वह गणराज्य जिसे दुनिया का पहला गणराज्य कहा जाता है, इतनी बड़ी परंपरा थी। इसीलिए सिर्फ उनको संदेह था जो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे। जो भारत की दृष्टि से समझ पा रहे थे उन्हें पूरा ये यकीन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी। ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी, उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था। एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं, इंडिया is the mother of political democracy, but also the foundation head of religious and spiritual democracy in the world, which is not found anywhere in the world. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा। परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, हमने क्या योगदान दिया। प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। यह पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं ये भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था, मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कालखंड आता है 72 to 97। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई। लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था। परंतु आज के इस अवसर पे मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलके, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था 1979 में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए, और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक। मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती है। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई। तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया,
विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था। और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उठता हुआ देखा। फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हुई। जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा। जो नेहरूवियन मॉडल था वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है। मगर उन्होंने कहा सभापति महोदय, जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं, रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन और उसकी विद्रूपता के ऊपर एक अटैक भी करने का कार्य किया। और फिर इस देश ने एक वो दौर भी देखा जब 13 दिन की सरकार बनी और उस 13 दिन की सरकार ने इस संसद के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया। जब संसद की सीधी कार्रवाई का प्रसारण हमने उस 13 दिन की सरकार में प्रारंभ किया तो लोकतंत्र में पारदर्शिता और संसदीय कार्य की पारदर्शिता में मील का पत्थर हमने 1996 में 13 दिन की सरकार में स्थापित किया। फिर 97 में चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे। जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर कुछ लोगों के, पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते। परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है और इसलिए अब परिस्थिति भिन्न है। अब मैं आता हूं इस कालखंड पे 1998 से 2023, ये तीसरा कालखंड जो हमारा हुआ, इसकी शुरुआत हुई पोखरण के विस्फोट के साथ। भारत की शक्ति का उदय हुआ और भारत में एक अंतर मैं और स्पष्ट कर दूं, 1974 में भी इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था और 98 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह था कि 1974 में हमारे घोषणा करने से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने घोषित कर दिया था कि भारत ने टेस्ट किया है। परंतु जब हमने 98 में किया तो जब अटल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु विस्फोट हो गया है। और दूसरा, 98 में हमने 5 एक्सप्लोजन किए थे
जिसमें हाइड्रोजन बम से लेके सब किलो टन तक के थे। और अंतर यह था कि 74 में हमने कहा था कि हमने शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया है, 98 में हमने कहा नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, और हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। फिर इसी सदन में एक और भी चीज हुई जो सभापति महोदय, कभी कभी क्या होता है, टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की धारा बहुत छोटी होती है। अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार गिरी, और वो एक वोट किसका था? उस समय श्री गिरधर गोमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो टेक्निकली तो वो संसद के में वोट कर सकते थे, पर मैंने कहा ना, टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की जो धारा होती है वो बहुत हल्की होती है। खैर कोई बात नहीं, एक वोट से सरकार गिरी, परंतु उसके बाद पुनः हम लोग आए पुनः हम लोग सत्ता में आए, और उसके बाद 2004 का दौर आया। 2004 में हम 7 सीटों के अंतर से चूक गए, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने, जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वेल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कहा अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु इज अ क्रिश्चियन लेडी इज आस्किंग अ मुस्लिम प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए सिख एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन 80% आर हिंदूज। That's why India is a marvel of democracy, और मैं कह सकता हूं यही क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी है। यह मूल भाव है जिसकी वजह से यहां सबको समान रूप से रहने का मौका मिलता है और आगे चलने का मौका मिलता है। आगे के 10 वर्षों के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वो सबको यह बात पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ। अब मैं आता हूं 2014 पे। जब 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा, आगे का नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा दिस इज द इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ, और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी। और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है। जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु यह विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए, हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता, जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है, और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है। यानी यह इतना बड़ा परिवर्तन आया। और अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है, तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए हैं, जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए हैं। यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं। यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए, तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया। हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद
इससे ज्यादा उदारता बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया। मोदी जी ने मुंबई में और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति, जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था, और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है। इसका हम सबको, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृत काल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, एक मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में बोला जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए। नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी यही गांव में रहना है, और ऊंट बिलारी ले गई हाँ जी कहना है। वो कह रहे थे कि हाँ जी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ 3 चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए। और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए। तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाँ जी कैसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर 1 मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर
G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। और अंत में सर एक मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, HIV भी है, जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे। Mr. Derek O'Brien, 10 minutes, please. So how many minutes? 10 minutes, 10 minutes. So we had 21. No. My colleague has spoken for 4. No, I adjusted most people. So that's not how we have done it. My colleague, we have 21 minutes. No. My colleague has spoken Mr. for Derek, 3. I've got 18 minutes, sir. Mr. Derek O'Brien, the Sir, time it's of 18 minutes. One second. Listen to me now. The board is saying 18 minutes, sir. Look at I have not even started. The board is saying 18 minutes, sir. You are telling me 10 minutes. I am aware of it. The ruling party time is still left for 1 hour because Sir, I have accommodated the opposition. Sir, my board is saying 18 minutes. Okay, please go ahead. If you can't understand this simple thing that I have accommodated opposition out of ruling party time of more than 1 hour. I can only understand. Okay, please. I can only understand my Trinamool Congress was given 21 minutes. Okay. My colleague has spoken for 3. Please, your time is already on. Give me back my parliament. Please. Okay, go ahead. Give me back my parliament, which is not mocked. Give me back my parliament, which is not undermined. Give me back my parliament, where prime ministers come and answer questions on the floor of Lok Sabha and on the floor of Rajyasabha. Last 7 years, not a single question answered on the floor of parliament. Give me back my parliament, where urgent national issues can be discussed from 11 o'clock in the morning on a special rule. Last 7 years, not one notice given by the opposition has been accepted. Give me back my parliament, where we get to see the Honorable Prime Minister regularly here with us. In 2021, our Honorable Prime Minister was here in 1 year for 4 hours and 3 minutes between 2 houses. Give me back my parliament, where members are allowed to vote when bills are put to vote and not the sacrilege which happened during the farm bills. Give me back my parliament, where we have a deputy speaker in the Lok Sabha. 5 years, still no deputy speaker. Give me back my parliament, where policy making is collaborative, not dictatorial. On record, I say, not from 2014 to now, 1 out of 10 bills are sent to parliamentary standing committees for scrutiny. Give me back my parliament, where legislation undergoes rigorous stakeholder evaluation. On record, I say, 9 out of 10 bills marked by 0 or incomplete pre-legislative consultation. 9 out of 10. Give me back my parliament, where bills are passed, keeping this House in mind the Council of States, the federal structure. On record, I say, about 1 out of 3 bills passed have been anti-federal, hurting the states. Shame. And on a personal note, we may be going to the new building. Give me back my parliament. We may be in the new building, sir, but so many bonds, so many friendships,
so many crossing of ideological barriers, so many times where we've condoled with colleagues from different parties who've lost their loved ones or celebrated the births of grandchildren. We used to do this in Central Hall. Sir, give me back my parliament. Let's go to the new parliament, but keep our Central Hall alive. Give me back my India. Give me back my Bharat. Give me back my India, where a state is not consumed by violence for 5 months. Sorry, Manipur, we still haven't managed to send our Honorable Prime Minister to you. From all of us, sorry. Give me back my India, where 1 out of 3 youth are not unemployed. Give me back my India, when double-digit food price inflation does not lead to 3 out of 4 people here who cannot afford a healthy diet. Give me back my India, where crimes against women are met with the harshest punishments, where our champion athletes don't get sexually harassed, where abusive men in power are not shielded. Yes, my party doesn't, All India Trinamool Congress led by Mamata Banerjee needs no lectures on women's reservation bill. Whether you bring the bill, don't bring the bill. We already have 1/3 of our elected representatives here in Parliament. But don't spare the men who have done what they have done. Doesn't matter whichever party they come from. Give me back my India, where farmers are guaranteed MSP for crops, where farmer suicides are a thing of the past, where farmers get prioritized over large corporations. 10,000 farmers committed suicide in 2021. Give me back my India, where the Prime Minister pays condolences when Jawans are martyred and not attend party functions. Don't show us hollow nationalism to win political points. Give me back my India, where states, and I say this from the Council of States, are not deprived of funds because a state's political ideology is different from the union's political ideology, and my Bengal, our Bengal, is deprived of 10,000s of crores of funds. Give me back my India, where its crown profitable PSUs, where its crown jewels, rail, SAIL, BHEL, BSNL, are not privatized. Give me back my India, where people's hard-earned money is not used to cover up frauds and corporate losses amounting to about 13 lakh crores. Give me back my India, where economic offenders loot this country and then flee to another land, while the common people here have to face gas cylinder and price rise. Give me back my India, where institutions are systematically weakened to be subservient to the ruling dispensation. Give me back my India, give me back my Bharat. You have lost your track. Where the subject is specific. Yes, Mr. Derek O'Brien, don't look around. Each word you said had nothing to do with the subject. Sir, I am on this, just 1 minute. Sir, my subject is, sir, discussions. 2 minutes, 2 minutes. What is 2 minutes, sir? 2 minutes. What is 2 minutes? I have got 16. Sir, I'm reading from here, sir. Parliamentary journey of 75 years, achievements, experiences, memories, and learnings. Yes. As a parliamentarian of 13 years, I'm sharing my learnings here in the Council of States. Please allow me, sir, to express myself. I disagreed with a lot of what the BJP spokesperson said. Brilliant speaker. I disagreed with his ideology. We quietly sat. No one disturbed him. He spoke. That was his view. Let me express my view. Give me back my... I'll conclude at 6 o'clock. You can continue to 5:58.
Give me back my India, where media owners, let's not blame the journalists, where media owners are enslaved by the party in power. Real journalists will remain real journalists. The real villains are the media owners. You say party in power in Delhi or Give state? me back, sir, I'm making a speech. If it's somebody's right to make a speech, it is your right also to give commentary. I will keep quiet and sit down then, sir. Humbly I say. We don't interrupt, we expect not to be interrupted. I was just getting informed. When you say party in power, we are a federal structure. Right, sir. You're right. Is it center or so state right, also? You're right. So the party in power... And you know why I'm asking? It's a 75... No one knows better than you do why I'm asking. Okay, sir. Mr. Modi's Bharatiya Janata Party. Give me back my India, where the government does not have to revise the methodology of calculating GDP to make its numbers appear artificially higher. This has been changed. Give me back my India, where slums are not covered with green curtains when we are hosting international events. Give me back my India, where dissent does not mean jail. Father Stan, Siddiq Kappan, Barbara Rao, Gautam Navalkha, Anand Telgumbe, and so many. Give me back my India, where religious propaganda does not trump science. Champions we have, sir, the champions of Chandrayaan. Give me back my India, where citizens do not die because of one man's whimsical announcements at demonetization at 8 p.m. And if we are talking about positive, look at the policies by some state governments like in Bengal, where there's a migrant policy in place, there's a migrant board in place. Please, let's learn from states. Sir, give me back my India, where statistics and data were not the enemy of the state. Give me back my India, when the environment wasn't sacrificed at the altar of corporate profit. Give me back my India, where language was a means of communication and not for Siva and not for everybody else who are now marked out. Thank you. As Thank you. Sir, I don't believe this. Sir, I do not believe this. I humbly appeal to you. My party has 18 minutes. 1 second. No, sir. How much more humility do you want us to show? 1 second. Sir, my party has 1 second. Honorable members, throughout the discussion today, valuable inputs have been provided by members by stating their experience and memories. Some inputs have also been provided. Nothing will go on record. Some inputs have been provided on the future of roadmap. In all, we had a very meaningful and purposeful discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Rajyasabha, achievements, experience, memories, and learning. Honorable members, 1 second. Honorable members, I could not have been more fair to the opposition. Sir, you have not given me my time. What are you talking about? Of this. Dear. What do you want me to be? Sit like a pussycat. You've taken my time. The House stands adjourned to meet at 2:15 p.m. tomorrow, Tuesday, the 19th September 2023, in Rajyasabha chamber of the new building of Parliament. 1 second. If you want to hear me, leader of the opposition, would you take your seat? Take your seat. Leader of the opposition took his entire time. I accommodated them. The House stands adjourned to meet on Tuesday at 2:15 p.m. 19 September 2023 in Rajyasabha chamber of the new building of Parliament.